Hello, hello.
So welcome to match number 2 International School Darts Tournament 6.0. This is match number 2 and then this would be against Svkm'S versus truly Marians. Svkm'S have won the toss and decided to bat first. So Pankit and Vishal would be the opening batters. Vishal would be taking strike. Pankit would be on the non-striking end. So it's going to be Yazad Waria to start the proceedings. Just had a check shot. They opened the account with a single. It was slightly on the higher side of the bat. There is an extra bounce on this wicket, but once you get in, this is a fantastic pitch to bat on. You get into your 20s and 30s, and if you do not get out after that, you are bound to get a big score. A 50 is always on the cards, and if you play well, you can go to that three-figure mark as well. A very quick outfield and a fantastic pitch to bat on. This would be the first few matches of the season. That's the reason the outfield is not as green as you could see it last year, because last year that was the first year of this venue and that was a beautiful green top. Not that it is bad this time, but it was such a picture last year. And you could see a mini action of David Villiers. So much of energy. Is this a darts tournament or an under 16 tournament? Look at the energy of the bowler. As quick as you get. Two good batsmen and a bowler who has a lot of energy in him. So we were going to that October heat which we saw, but the last couple of days the temperatures have been a little softer for us. It has dipped down. This must be 19-20 degrees right now over here in Lonavla. So this is a place where you can have both the extremes of temperatures. This time slightly pleasant to play. But you have a closer look at Yazad. He is a bowler who has, so when he comes to bowl in, and he has that David Willey kind of action when he bowls that. Just have a closer look at him. That is beautifully played straight to the fielder. Good cricket all round. A very good ball and equally well played. Good communication. The fielder also did a fairly good job of stopping that one because that was travelling at rate of knots. So good brand of cricket being displayed. Remember, it's not a tournament of the regular, so it's a darts tournament, and considering that, they're playing a fantastic brand of cricket. Oh, that is so very well played. So when you have that footwork going, a lot of energy in the first few balls, and they have travelled all the way, like travel for 1.5 to 2 hours to come to this place and play their favorite game. So once you give your best part, the most valuable thing for anyone is his life, that is his time. So when you're giving a part of your life, that's your time for something, it has to be something which you enjoy, and cricket is something which all these that's beautifully done straight to the fielder though. So both the batters having the middle of the bat, the bowler also would be happy. Only problem is the dew, and it will get heavier as we go on. A beautiful tabletop ground, and right now in the morning you would see it's surrounded by beautiful hills around. Oh, that is nice. So good decisive footwork from both the batsmen of the back foot and the front foot, and also some good bowling by the left armour. So the score at the end of over number 1 is 4 without loss. Vishal would be happy because he has got off 2 runs of 2 balls, and Pankit has got 2 runs of the 4 balls he faced. SVKMs have a lot of teams, 3-4 in the darts tournament. SVKM strikers, and they one of at the last 4 in the semis. At least one SVKM team is always there. So after a lot of hard work, some issues with the traffic. In fact, a lot of issues. 30-40 kilometers of that treacherous traffic, and after that they have reached a place in the lap of nature, Lonavla, which was known for its scenic beauty and wonderful sightseeing. It has been covered with mostly concrete jungles, but in this beautiful ground surrounded by some scenic beauties,
If you had come last year, you would have fallen in love with this place immediately. This time around, the green is not that green this year, I would say. But you will fall into love of this ground immediately as you enter. It's a beautiful, almost like the grounds which are there in Sri Lanka or in West Indies or like just our Dharamshala. It's a beautiful setting. You would love to play over here in the daytime as well. But they are taking a lot of time to get their fields right. 8:30 we started this match, half an hour slightly behind schedule. That generally does not happen in Chitpur tournament. That's beautifully bowled. If you have a keen look at the bounce, it is very true, and it's not the pitch where you can get no bounce or something. It's there for everyone. The batters can play their shots, the bowlers can bend their back and get that bounce even. Th- This is a fairly good start, both the batsmen and by the fielding side as well. They are bowled well and a lot of energy in the first few overs. And it is slightly cooler here, and the ball's traveling with at the rate of now. It is very difficult to field at times, with the dew also a factor in it. That is so delicately played. So this guy is displaying some good technique, some stylish shots. It's a copybook fashion. Patil is not showing his power, but also his prowess and technique when it comes to batting. So it's Pankit Shah on one side, Vishal Patil on another. Both the batsmen on 3 runs each. Vishal has got a run, a ball three. That is straight to the fielder and very indifferent position. A short point, I would say, and straight to him. He got on top of the ball, got it down, but that was a very different fielding position, and it has worked wonders for them. A short point, I would say, and a very good batsman getting out Pankit. There was nothing wrong in the shot which we were slightly uppish, but there was some different fielding position which got rid of the opening batter who was looking good for his brief stay. 6 runs is what on which the first wicket falls. If you are a batsman and an opening batsman in that first 3 4, and if you get on this wicket or this ground, you'll be kicking yourself because the way the other batters bat after that, you just have to see at the faces of the batsmen who get out early as the opening batters, because once you get in, this is a beautiful ground to have continue batting. And Pankit is a good batter, and he would hate to get out early on this ground. One thing can be seen precisely in truly Marian's team, they are working in synergy. As a fielding unit, very rarely do we see everyone charged up for it. Just like a young amateur team of the school boys who play with a lot of energy and enthusiasm, it's a team like that. Everyone's excited to get into that. Very rarely do we see in corporate matches or amateur matches or something like that. And that is good to see for a change. Not always we need to like follow all the fielding position. There we need to have some characters in the team. Almost 11 of them. They are trying to get their own field set. So that can be seen in the fielding team. And that is always good also. At times that boyish energy is always good to have. But this team, we could see Vishal with some stylish shots. The batsman who got out was also looking good. Oh, that was a gift on him on the legs. A little touch on it would have fetched him 4 runs. But that's fine. That's fine. Oh, that's the first extra of the innings. They bowled it with discipline. They have done the simple things really well. Keep it simple, keep it straight. That's what they are telling each other. So you can see so much of like discussion before a ball is bowled. I do not think they would be able to complete their overs in specific time.
So the score is 8 for 1. We are yet to see the first boundary. Expect a boundary the next couple of balls though. Boundary hitting time now. That's down the leg side. Second wide of the over. Second wide of the innings. But look at the carry which the bowler is getting. He's not express, but the bowlers are getting good bounce on this wicket. Yet to see the first boundary. They played some delightful strokes, but straight to the fielder. Now that is nicely done though. Straight to the fielder again. The fielder at short point, maybe the skipper, orchestrating his field. The score at the end of over number 2 is 9 for the loss of Pankit's wicket. Pankit was looking good. He was playing some good shots. He got out unfortunately. So the left armer is getting ready for his second over. So Yazad, you look at him. Left arm bowlers are the flavor for any team. Madhu Shankar from Sri Lanka, you Mitchell Stark, David Willey. Everyone performs well. This guy also just hops, skips, and jumps at the last moment. Same kind of action. He's bowling with so much energy. See the bowler Yazad. Of course, it's a Dats tournament. He maybe 35 plus, 30 plus. Is bowling like a 16-year-old bat. Look at the energy with which he comes in and enjoys the ball after every ball. Just have a close look at him. Still to see the first boundary. That's way too wide. Outside the off stump. Yes. So Yazad and Amri starting off well, barring those three wides which they have bowled. The best part is they are keeping the ball within the area they are expecting. And the bounce. See the fielders. Exactly, they are. People find gaps. Right now, SVKM batters are finding the players. Pankit was looking good with his free flow of the bat. And even Vishal was looking good. Somehow after the wicket, they seem to be slightly worried about their footwork. This is smash though. Again straight to the bowler. Every good shot. That must have hurt. And last couple of days, the temperature has changed. Suddenly, the weather has changed. The climate has changed from the October heat, which we were suffering from. These are the pleasant last 2 days which we are experiencing right now. Is having effect on the fielders who get the ball when it is hit with full rate over there towards them. Yazad to Patil now. Vishal Patil still to see the first boundary. And he has got him. Got a very good batsman out, cleaned up. Both the two elegant looking opening batters are back in hut. That's a big blow. Vishal Patil, who can be a prolific scorer, gets out. So both the opening batsmen back. Pankit is back. Vishal's back.
So they have lost the two opening batters who were looking good in the first over, but both the batsmen out in different fashion. One trying to get the ball into their point region, the other one trying to play a shot towards the mid wicket. Vishal was looking good though. The first shot which he played cross batted, and he lost his wicket. Yazad, there would be extra zing in his bowling. Not that he was bowling with some little efforts. He was trying to put his 200%. And this is the game which will keep you alive. This is the game which will keep you young. And no matter you're 30, 40, 50 plus, cricket's always going to keep you young. And this young man is bowling. Oh, what a shot to start off the innings. Any shot into the covers. Virat Kohli. Virat Kohli generally starts off 90% of the times with a cover drive. Most of the batsmen would try to have a small flick towards the mid-wicket region. Other batsmen tend to play straight, but Virat Kohli starts off with a cover drive most of the time. So it's always good when you start off with a cover drive. Very often the first few balls which you face often decide your innings. And getting the ball off the middle of the bat, the very first ball which you face will always give you that confidence, no matter what kind of player you are. Well, that wasn't off the middle of the bat, but that would help. If you have a look at it, maybe he just opened the face of the bat and got it into the gap. That was the only thing. They had played some good shots, but unfortunately, most of the shots were going straight to the fielders. This time, he just opened the face of the bat and into the gap. The score at the end of over number 316 for the loss of the opening batters. So these guys have travelled all the way to Lonavla in a beautiful place to play this beautiful game, and they're serving their passion. We are very happy to be with you in enjoying this beautiful game. Oh, that wasn't that a great shot. Outside the off stump, away from his body, did not move his feet. The first shot which he played was he was close to the ball. This one, it was slightly away from him. So both the batsmen have got wickets. Fielder at point, who is orchestrating the field, got one the catch of the opening batter. Oh, that's nicely done. That's nicely done. Not every time you hit a boundary or a sixer is what when you play well. When you play these defensive shots, that also typifies your batting technique. Not everything has to go for a boundary. It's almost like business. You will not have bumper sale every day. At times you're going to have less sale. At times you're going to have no sale. But sometimes you're going to have some bumper sales. So that's how. Oh, that is nicely done. What a shot that is. But whoever is orchestrating the field and is getting his field absolutely right. The only two fielders, wherever they are the boundary riders, the balls are traveling to those people. So some good bowling, some good field placement is serving them well. But the left-hander who has got the first boundary comes on strike again. It is Saurabh now. 17 for 2. 17 generally is considered as a bad number in Indian. In fact, it is 18. But 17 for 5 it was when Kapil Dev came into bat and scored those 175 runs for India as well. So you may look at it anyways. So 17 for 5 against Zimbabwe in England, he scored that 175. So from 17 for 5 to 175 and winning that crucial match. So right now it is 18 for 2 in 3.2. Saurabh. Let's see whether he's able to find the gap in the very same place which he got his first boundary. The idea was right. Little connection on it, it would have fetched him 4 runs. He wanted to get that pickup shot or a flick. One batsman who plays it very well right now in the World Cup, who is like taken the World Cup by fire, is Quinton de Kock with his flicks, or I would say the hits down the leg side.
A similar kind of shot attempted. That is nicely done. Good bowling and equally good. Well played. One needs to stay on this wicket for a few overs and then take charge, because you would enjoy once you get in. It is very difficult for the bowlers to get you out, and a pitch on which you can score very heavily. The bowlers have bowled really well to keep a tab on scoring, because the last two innings they went hammer and tongs, the batters. This is beautifully done. The ball is traveling at the rate of knots. It will take some fielding, good fielding effort, some good soccer skills, and he chased the ball all the way. That was some good commitment over there. Generally, you are not advised to use your feet, but here he had no option. The best part was he had the eyes on the ball. Whilst fielding, you should be committed and committed to stop that one. And there was 2 runs saved. Considering it's a darts tournament, that was a brilliant effort. Talking about efforts, these two guys, the opening bowlers, are having a dream spell here. They are bowling really well against some good batting attack. What a shot! This is the best of the shot, and it deserved a boundary. Some good fortune, but that shot deserved, because he used that short arm jab and it was timed very well. The ball wasn't that bad. He just dug it out, used that short arm jab, and it was traveling. 25 for 2. Now that can happen. The ball just skids away at times. It's a ground which is lightning quick. Oh, that was an opportunity missed. The score at the end of over number 4 is 25 runs for the loss of 2 wickets. करता हूं जूटर प्रेजेंट इंटरनेशनल स्कूल डैड्स टूर्नामेंट। ये छठा पर्व है और छठे पर्व में आप सभी का स्वागत है। जो भी दर्शक इस मैच को लाइव देख रहे हैं जूटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, उन सभी दर्शकों का स्वागत है। मैदान में उपस्थित सारे दर्शक, बढ़िया माहौल है, ठंडी थोड़ी सी बढ़ गई है। 4 ओवर के बाद 25 रन स्कोर है। एसवी के ब्लेजिंग स्ट्राइकर और ट्रूली मेरियंस, दो टीम के बीच मैदान में खेला जा रहा छठे पर्व का दूसरा मुकाबला मैदान में चल रहा है। 4 ओवर का खेल समाप्त, 25 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अब फिलहाल हर्षित जैन और सौरभ डागा की जोड़ी मैदान में है। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं एंजर चौगुले, जिनके स्पेल का ये पहला ओवर है और टीम के लिए ये 5वां ओवर मैदान में चल रहा है। थोड़ी सी खराब शुरुआत जरूर रही है टीम के लिए। SVKM's ब्लेजिंग स्ट्राइकर्स टीम जो है बल्लेबाजी कर रही है और पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही है, क्योंकि शुरुआती समय में टीम ने 2 विकेटें खोई है।
और फिलहाल पारी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे सौरव डागा और हर्षित जैन। सौरभ निजी 11 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और हर्षित जैन 6 गेंदों में 3 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अच्छी गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है ट्रूली मैरियंस की तरफ से, क्योंकि शुरुआती समय में 2 झटके दिए हैं एसवीकेएम्स टीम को, एसवीकेएम्स ब्लेजिंग स्ट्राइकर टीम को। और यहाँ से आगे एक साझेदारी की ज़रूरत है और दोनों के पास समय है। सौरव डागा और हर्षित जैन दोनों के पास पूरा समय है, थोड़ा सा संयमी बल्लेबाजी कर सकते हैं इस समय में। और सेट होने के बाद, थोड़ा सा समय बिताने के बाद बिल्कुल आपको बड़ा शॉट खेलने का मौका मिलेगा, बड़े प्रहार करने का मौका मिलेगा, खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। इस बार गेंद को कट करना चाहते थे लेकिन गेंद थोड़ी सी दूर रही, दूर से खेलने का प्रयास, खड़े खड़े खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं। ऑफ स्टंप की लाइन पे गेंद और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल इस ओवर की ये तीसरी डॉट बॉल है। टोटल 4 गेंदें हो चुकी है, एक सिंगल इस ओवर में आया है अब तक। अंजर चौगुले जो है गेंदबाजी कर रहे हैं, जिनके स्पेल का पहला ओवर मैदान में चल रहा है। इस बार फिर से बढ़िया गेंद, डटे रहना है ज़रूर। थोड़ा सा मुश्किल समय है, इस मुश्किल समय से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा संयम दिखाने की ज़रूरत है और सौरभ और हर्षित के पास पूरा समय है। अगली गेंद डाउन द लेग साइड, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और टप्पा पड़ने के बाद और बाहर निकली, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। अतिरिक्त रनों पे इजाफा यहाँ पे वाइड के रूप में 1 रन टीम के खाते में जुड़ जाएगी। और बिल्कुल रफ्तार है, गति है अंसर के पास। और फिर से एक बार ये गेंद डाउन द लेग साइड, वाइड बॉल। पहली 4 गेंदें अगर देखिए तो 5 गेंदें बिल्कुल सही ठिकाने पे, बढ़िया लाइन और लेंथ थी, लेकिन पिछली 2 गेंदें बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर। लगातार दूसरी वाइड और अतिरिक्त रनों में इजाफा। 5वें ओवर की आखिरी गेंद, इस बार लाइन और लेंथ पे परिवर्तन और बढ़िया स्ट्रोक। जितनी ताकत नहीं थी लेकिन बिल्कुल फ्लिक किया गेंद को, कोई मौका नहीं फील्डर के पास गेंद को रोकने का। गेंद गई स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। आखिरी 3 गेंदें बिल्कुल लेग स्टंप की लाइन। अब पहली 5 गेंदें जो की थी बिल्कुल सही ठिकाने पे, ऑफ स्टंप के लाइन में 5वें स्टंप पे, चौथे 5वें स्टंप पे गेंदबाजी कर रहे थे। उछाल भी मिल रहा था, टप्पा पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर भी निकल रही थी, लेकिन आखिरी 3 गेंदें देखिए बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर। और जो आखिरी गेंद जिसपे चौका लगा बिल्कुल पैर पे गेंद थी और बिल्कुल आसानी के साथ गेंद को खेला स्क्वायर लेग क्षेत्र में और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। और 5 ओवर के बाद एसवीकेएम्स ब्लेजिंग स्ट्राइकर्स ने बनाए 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 32 रन। सौरभ के ऊपर बड़ी दारोमदार है टीम, बड़ी जिम्मेदारी सौरभ के ऊपर है कि यहाँ से आगे थोड़ा संभल कर खेले, एक लंबी, एक बड़ी पार्टनरशिप बनाए, साझेदारी बनाए। और गेंदबाजी के लिए अमरीश गेंदबाजी की कंटिन्यू करेंगे, जिनके स्पेल का तीसरा ओवर रहेगा। 2 ओवर अब तक पूरे कर चुके हैं स्पेल के, जिसमें 14 रन और 1 सफलता उनके खाते में है। और हर्षित जैन और सौरभ के बीच में एक छोटी सी पार्टनरशिप अब तक बनी है। इस बार बिल्कुल 5वें स्टंप पे गेंद। और पिछले मैच में हमने देखा दोपहर के समय में थोड़ा सा टप्पा पड़ने के बाद गेंदें नीची रह रही थी। इस बार थोड़ा सा उछाल मिल रहा है, कुछ गेंदों में उछाल मिल रहा है, कुछ गेंदें नीची रहती हुई। जिस गेंद में रफ्तार है उसमें थोड़ा सा उछाल मिल रहा है, जो धीमी गति की गेंदें बिल्कुल नीची रहती हुई।
और इस बार छोटी गेंद, लेकिन धीमी गति से की हुई। इसी का जिक्र हम कर रहे हैं, उछाल नहीं है। शॉर्ट ऑफ लाइन, धीमी गति की गेंद, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, कोई मौका नहीं रन के लिए। लगातार दूसरी डॉट बॉल। अच्छी शुरुआत एम्ब्रिश के तीसरे ओवर की। हर्षित जैन और सौरभ की भी तारीफ करनी होगी। टीम मुश्किल समय में है और बिल्कुल संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार बिल्कुल आगे वाली लाइन, बिल्कुल हल्के हाथों से कवर क्षेत्र में पैर से रोकने का प्रयास। एक रन पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी के साथ एक रन पूरा किया। और यही करना होगा जब बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं मिलता है। इक्का दुक्का के ऊपर ध्यान देना होगा। गैप में गेंद को खेल सकते हैं, इक्का दुक्का के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। स्ट्राइक रोटेट करते रहिए ताकि रन्स भी आते रहे, पार्टनरशिप बनती रहेगी। जितनी ज़्यादा डॉट गेंदें खेलेंगे, दबाव बढ़ता जाएगा। और एक अच्छी सोच में कहूँगा कि इक्का दुक्का के ऊपर भी ध्यान दे रहे हर्षित जैन और सौरभ डागा। हालांकि स्कोर ज़्यादा नहीं बना है, लेकिन पिछले 2-3 ओवर से विकेट टीम ने खोया नहीं है, एक अच्छी बात है। इसके भी हम फिर से एक बार दिशा दिखाना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। ये लाइन और लेंथ अच्छी है, क्योंकि सौरभ धागा जो है बिल्कुल खड़े खड़े खेलने का प्रयास करते हैं। गेंद को दूर से खेलने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा फुटवर्क की कमी वहां पे नजर आ रही है। फिलहाल आवाज तो जरूर आई है, अपील जोरदार, लेकिन इस अपील का अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं। शायद गेंद पैड को लगी है। आवाज जरूर आई थी, लेकिन पैड को लगकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्लेबाज बिल्कुल सुरक्षित है। सौरभ डागा स्ट्राइक पे है, 13 गेंदों में 15 रन पे बल्लेबाजी कर रहा है। इस बार आगे वाली लेंथ, इतना बढ़िया टाइमिंग नहीं था, हल्के हाथों से खेला। एक रन जरूर मिलेगा, और एक रन की मदद से स्कोर 34 रन पे पहुंच चुका है, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 6 ओवर का खेल हो चुका है। 34 आफ्टर 6 फॉर द लॉस ऑफ 2। हर्षित जैन playing on 4 of 9. Saurav Daga playing on 16 of 14. 34 runs after 6 for the loss of 2. इस प्रतियोगिता के बारे में हम आप सभी को कुछ बताना चाहते हैं। जो भी दर्शक थोड़े से लेट ज्वाइन हुए लाइव मैच देखने के लिए, उन सभी का स्वागत है। बताना चाहते हैं आपको, आज के दिन का ये दूसरा मैच है, पहले दिन का दूसरा मैच। SVKM's ब्लेजिंग स्ट्राइकर और ट्रूली मैरियंस के बीच में खेला जा रहा जूटर प्रेजेंट इंटरनेशनल स्कूल डैश टूर्नामेंट का ये पहले दिन का दूसरा मैच मैदान में चल रहा है। और इस प्रतियोगिता में 28 टीम्स ने शिरकत की है और 7 ग्रुप है, 4 टीम पर ग्रुप। और पहला मैच खेला गया फजलान यूनाइटेड और BD रॉयल्स के बीच में। फजलान यूनाइटेड ने उस मैच को जीता, पहली जीत दर्ज की। और इस प्रतियोगिता में स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा योगदान है, सहयोग जो मिला है हमें, उन सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, सभी खिलाड़ियों की तरफ से।
ऑर्गेनाइजर की तरफ से। इस बीच अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल लेग स्टंप की दिशा में गेंद थी। ओ देखना पड़ेगा, ये बल्लेबाज रन आउट के रूप में बढ़िया साझेदारी बन रही थी, अच्छी साझेदारी बन रही थी, लेकिन दूसरी रन लेने का प्रयास, थोड़ी सी रनिंग बिटवीन द विकेट कम पड़ गई और इसी के कारण रनआउट के रूप में तीसरे विकेट का पतन एसवीकेएम्स ब्लेजिंग स्ट्राइकर को लगा, तीसरा झटका। बढ़िया थ्रो, बढ़िया शॉट जरूर था, लेकिन उससे बढ़िया फील्डिंग और थ्रो वहां पे नजर आया और उसकी बदौलत तीसरे विकेट का पतन। सभी स्पॉन्सर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। यूज सेगवे को स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के, बहुत बहुत धन्यवाद यूज सेगवे। हाइड एंड सीक ऑफिशियल स्नैकिंग पार्टनर है। इलेक्ट्रो रश ऑफिशियल हाइड्रेशन पार्टनर, बहुत बहुत धन्यवाद। विराट ऑफिशियल अपेरियल पार्टनर है। डुलाली ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर। स्पोर्टिंग टूल्स ऑफिशियल इक्विपमेंट पार्टनर। तृप्ति ऑफिशियल फूड पार्टनर। बहुत बहुत धन्यवाद यू सेगवे, हाइड एंड सीक, इलेक्ट्रोरश, विराट, दुलाली, स्पोर्टिंग टूल्स एंड तृप्ति। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। ऐसा ही सहयोग मिलता रहे भविष्य में, यही आशा करते हैं आप सभी से। और जतिन मेहता नए बल्लेबाज मैदान पे बल्लेबाजी करने के लिए। अभी थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई एसवीकेएम्स ब्लेजिंग स्ट्राइकर की, क्योंकि 2 विकेटें जल्दी गिरी, तो उसके बाद छोटी सी पार्टनरशिप वहां पे बन रही थी, लेकिन दूसरी रन लेने का प्रयास, दूसरी रन लेने के चक्कर में वहां पे रन आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे बल्लेबाज। फिलहाल फ्लाइटेड गेंद थर्ड मैन क्षेत्र में खेला, शॉर्ट थर्ड मैन वहां पे दायरे के अंदर, 1 रन और हर्षित जैन स्ट्राइक पे है। अच्छी रनिंग, 1 रन। और यहां से आगे बिल्कुल संभल कर खेलना होगा, क्योंकि 3 विकेटें गिरी है। थोड़ी सी मुश्किल समय में टीम है, उससे बाहर निकालने के लिए फिर से हम उसी चीज का जिक्र करते हैं कि संयम। जब समय मुश्किल होता है तो संयम बहुत जरूरी है, संयम से बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है। एक गलत शॉट और एक गलत रन अगर आप दौड़ते हैं तो टीम की मुश्किलें बढ़ सकती है, तो इसीलिए थोड़ा संयम से बल्लेबाजी करें। जतिन मेहता और हर्षित जैन की जोड़ी मैदान में दारोमदार है, यहां से विकेट संभाल कर खेले। पीछे खेलने का प्रयास कर रहे हैं, जो आगे वाली गेंद है, अगर आगे खेलते हैं, फ्रंट फुट थोड़ा बाहर, फ्रंट फुट पे आगे खेलते हैं तो बिल्कुल ये गेंद के ऊपर खेल सकते हैं आप, लेकिन हर गेंद आप पीछे नहीं खेल सकते। हर गेंद जब तक इस बार लेट खेला, दिशा दिखाई, थर्ड मैन है दायरे के अंदर, जिन्होंने गेंद को रोका। जब तक आप बल्ला चलाते बैकफुट पर खेलने का प्रयास करें, तब तक गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे जाती है। छह 6.5 ओवर के बाद स्कोर 38 रन, 38, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। हर्षित जैन स्ट्राइक पे है, 5 रन बनाए अब तक 10 गेंदों में। राहुल दोषी, जिनके स्पेल का ये पहला ओवर है, और अच्छा रहा है पहला ओवर राहुल दोषी का, केवल 4 रन इस ओवर में। और आखिरी गेंद इस बार आगे वाली लेन, बिल्कुल हल्के हाथों से खेला है, डाय जरूर लगाई थी रोकने के लिए, कवर क्षेत्र में गेंद जा रही है, दूसरी के लिए निकल पड़े, दौड़ पड़े वहां पे, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। थ्रो जरूर आया, लेकिन तब तक 2 रन पूरे कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। और उससे भी नफीतुली गेंदबाजी की है अमरीश ने, 3 ओवर में 16 रन, 1 असफलता उनके खाते में है। फिलहाल इस 2 ओवर के साथ, माफ कीजिएगा, 2 रन के साथ ओवर समाप्त हो चुका है, 7वां। 7 ओवर के बाद 40, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर।
वेलकम बैक। छोटे से अंतराल के बाद लेकर चलते हैं आपको फिर से एक बार मैदान में। खूबसूरत माहौल यहाँ पे है फ्लड लाइट में। ग्राउंड के आजू बाजू में अगर देखेंगे तो बिल्कुल हिल स्टेशन जैसा वातावरण। हर्षित जैन और जतिन मेहता की जोड़ी और मोहसिन गेंदबाजी करने आए हैं, जिनके स्पेल का ये पहला ओवर है। पहली गेंद पे सिंगल आई। यही करना होगा, इक्का दुक्का के साथ पार्टनरशिप बनानी बहुत ज़रूरी है, साझेदारी बनानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर डिफेंडेबल स्कोर खड़ा करना है, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर खड़ा करना है, तो बिल्कुल यहाँ से आगे विकेट संभल कर स्ट्राइक रोटेट करती रहनी बहुत ज़रूरी है हर्षित जैन और जतिन मेहता को। इस बार छोटी गेंद और बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद है, एक रन जरूर मिलेगा। फिर से एक बार इस बार जोरदार अपील और बिल्कुल अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है। विकेटों का सिलसिला जारी है। जतिन मेहता बैक टू द पवेलियन। बढ़िया गेंदबाजी मोहसिन, जिनके स्पेल का पहला ही ओवर है, और अच्छी शुरुआत मोहसिन के लिए। कॉट बिहाइंड, आत्मविश्वास भरी अपील वहां पे देखने को मिली, और कॉट बिहाइंड होकर जतिन मेहता, जिन्होंने 5 गेंदों में 3 रन बनाए और बैक टू द पवेलियन। एसवी केम्स ब्लेजिंग स्ट्राइकर्स के मुश्किलों में इजाफा। 7.3 ओवर के बाद 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर 42 रन। T20 गेम में एक बल्लेबाज अगर लंबी पारी खेलता है तो बिल्कुल एक रिस्पेक्टेबल स्कोर खड़ा होता है। एक बल्लेबाज को बिल्कुल डटकर बल्लेबाजी करनी होगी। फिर से एक बार जोरदार अपील, जोरदार अपील, लेकिन इस अपील का अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं है। शायद ये गेंद स्टंप को मिस करती हुई। आत्मविश्वास That's traveling towards the square leg region. Again, some good footwork. Twice he has saved a couple of boundaries. So 2 boundaries saved.
There is El Clasico happening between Barca and Real Madrid. Barca is 1-0 up, but here some good footwork to save that boundary. The score is 44 now, 44 for 4. 44 for 4 in 8.1 overs. So that is 49 balls, 44 runs, and 4 wickets. 44 for 4. All fours on the scorecard. And good stop. He was almost anticipating it to come back. That you can be always be assured the bowlers are the best fielders to their own bowling. They put 100%. They do not like the runs against their team. That's what they say. Now, dew is going to be a big factor. Every time you roll down the ball to the bowler, it will affect that ball. Boundary hitting time now. Boundary alert time now. They need some momentum. They need few boundaries. That was down the leg. That's what the umpire says. He missed out, I would say. That can happen after you lose 4 wickets, 4 quick wickets. Even if there is an opportunity, this should have travelled a long way. Full toss on leg stump. The idea was right, just a little connection would have fetched him 4 runs. A strong hit would have got him 6 runs. That was a free hit which he missed out. That can happen, always happen when you lose a few wickets. Yes, good shot. They need that mindset to be open now. It's always in the mind, they say. Cricket is played more within the years rather than the skills which you have. Right now, they're under slight pressure that they have lost a few wickets. But it is a ground on which a couple of batsmen can do the job. It's a beautiful wicket to bat on. Very little movement in the air or also of the wicket. So if once you get your confidence right, once you start hitting a few boundaries, you'll enjoy batting on this wicket. It's a batting paradise, they say, because last a couple of years, maybe 1.5 years, which I have seen, people have enjoyed batting here. You hate to get out on this wicket. Both batsman's heart would have been in his mouth. So some big appeals. Truly, Marians have got everything absolutely right going on for them. And what SVKMs need is a good partnership. Very rarely do we see a SVKM team struggling because they do very well in the tournaments like this. More often than not, they are on a better side of the results. That is nicely done. Using soft, that has to be a couple. They need to take the first one quickly. The first run wasn't taken that quickly, but there was nothing wrong in it. A big gap. On the other day, when the Afghanistans won against Pakistan, the best part about their batting was the running between the wicket.
and straight through him again. Good running though. Good alertness shown displayed by the batsman who has come in new. Harshit may not be known for his running, but Tanpreet has shown some good energy. They need a lot of this. If you are falling back in the run rate or you have lost a lot of wickets, running between the wickets can be bail you out, and also a few boundaries can be of great help. So 61 is what they move on to now. 61 for 5. Harshit batting good. That he wanted to play into the point region, then he changed his shot. It went straight down the ground. The length of the ball never demanded a shot like that, but it has gone down the ground. 62 for 5 now. So Tanmay gets off the marks of the very first ball which he faces. That is always good to get off the mark of the first ball which you face. 63 for 5 now. They need to somehow re-strategize their total now. They must have thought out with 170, 180 in their mind. But 63 for 5, they should be looking at 120, 130 or 140 to make it a fighting total. And you never know. Once you get... That was good bowling. He threw the bit outside the off stump. He had to go for it. He had to go for it because there was width on offer. But this is where you lose your wicket, when you play away from your body. Oh, that is good bowling. The first ball he threw it up and he asked the batter to lunge forward and play out on the front foot. Then he just pulled his length back. So some smart bowling, changing his length, changing his line. That is nicely done though. But straight to the fielder. That has been the story of Svkm's team or the batting innings so far. Good shots going straight to the fielders, and that has somewhat halted their progress. In fact, halted the progress big time. 63 for 5 at the end of 12 overs. 12 overs, 63 runs on the scorecard. 8 overs remaining. Tanpreet has come in and he has got some good energy to the innings. He has run a couple of singles quickly, got a brace, and he is off the mark of the very first ball which he faced. So some good positive energy by Tanpreet. You always need a member in a team which would lift you in those difficult times. No matter what the situation is, there are certain players who will always give you that vibrance in the team. He will always be ready and enthusiastic. Tanpreet seems to be one of them, ready for the fight. And whatever be the total or score, this guy, such people always keep on fighting. So he's doing the right thing, is keeping the strike rotating, and a very different kind of bowling attack. A mixture of Harbhajan Singh and let's say an off spinner of a unique action. Just see the way he comes in, almost see the way he moves his hands all over while he bowls. This is nicely done though. Good fielding again. They are placing their fielders in some indifferent positions, but those are working really well for them. Very close to the bowler. That shot player at mid on. Harshit seems to be set now. On this pitch, once you get set, you will get opportunities to get boundaries. Shots like this are going to help him out because that's the confidence you will get after being there for some time. Harshit stays there. He maybe have like got 20 runs of 29 balls. He may easily cover that up, and maybe a couple of balls, a few boundaries.
the innings would be back on track. 65 for 5. That was nicely bowled though. Right line and length. That's what you call a good length, where a batsman finds it difficult to play out the back foot or to go on the front foot. So that was exactly that. So good length varies for different batsmen in different positions. That is beautifully done. Off the back foot. Well played by Tanpreet though. So the last ball of the 13th over. The score at the end of over number 13 remains on 65, 65 for 5. Exactly 5 runs per over at the end of 13. So the glimmer of hope, the batsman who was set over there gets out. You should not be giving it away, because once you are set in, you should not be giving your wicket away. But that's a crucial wicket. The score is 65, 65 for the loss of 6 wickets. So 65 for 6 is what the score is. 65 for 6. We are into the 14th over. So there are two ways of approaching this innings now. Either someone has to stay there and wait for the last 2 3 overs, or the other approach would be to go the English way, attack everyone. That's what the English tried a couple of days back. Everyone who came in tried to hit their way out of it. These two would be ideal foil, like they would be pushing for singles. Harshit was looking good, he was trying to be aggressive, and this is the wicket where you can consolidate your good start. And once you are set, once you are in, you need to maximize that. This is a ground where you can get a lot of 50s. So score is 66, 66 for 6. That is beautifully done off the back foot. Not an easy shot to execute when you are crammed up for space. He does it well.
The spinners have got it right against Sanpreet. They have just not given him that space to work with. And some zip of the wicket, some bounce, also aiding the bowlers. 67 for 6. It's the full moon day, and the bowlers under this full moon are showing their full prowess. They are having a good command and control over the innings right now. Again, some this is one aspect they need to work on. They missed a lot of balls on the leg side, which they could have got a few boundaries. They missed a couple of full tosses, if I remember, or some balls down the leg side where a little connection on it would have fetched them a boundaries to be minimum. Some full tosses missed on the leg side. 67 for 6. So the score is 67 for 6. It's a very good ground to play your cricket, especially for a 2020 games. Almost 60 meters boundary on all sides, and a ground which is surrounded almost 270 degrees with some green tabletop hill mountains on both the sides. So new bowler comes in from the mountain end now, the hill end. Now this is Satyaprakash Joshi ground in Lonavla, SPJ Lonavla, which they say. It's a ground which we all love to play your cricket. That is beautifully done by Tanpreet. They need to collect those singles. With the single, the score moves on to 68 now, 68 for 6. Varun. That was nicely bowled. That is slashed, and that would go all the way for the boundary. They need this. They need a couple of boundaries this way. So they slashed and slashed hard. A few slashes, a few swipes, they work well in a T20 game. Not all the time of the middle of the bat. This, if there is width, you slash, you swipe, whatever way you get those runs. So those four crucial runs, some boundaries will always give you that confidence. So the bowlers who are finding it easy to bowl those dot deliveries, now the bowler has to think. Even the captain has to think and restructure his fielding. And he changes his length, and that has gone at the rate of knots to the fielder at long on. So that's what aggressive intent can do. But after hitting the boundary, the bowler pitches it up, and just to compensate the short delivery, he bowls it to this arc. He might go back to his normal good length now. Short ball went for a boundary, then an over pitched one went straight down the ground. This one might be a good length one. No, in fact, he again pitches it up. Yeah, there was a chance of a couple, but still they would be happy with the singles
This over is a productive one. They have got 7 runs so far, a boundary, and 3 singles in it. Watch out for another boundary because he might just hit another one. Once you hit a boundary, you always want to have one more in that over. He went for it, and this would be testing the fielder over here. And he has to be a part of El Clasico today. This team has saved a lot of boundaries with their feet. Today's Barcelona versus Real Madrid, but this guy has used his feet well. Barcelona is leading 1-0 in the El Clasico right now. Some footballers on the ground even. जीत भी गया. So 76 for 6. They got 9 runs in this over. They got 9 runs in this over. So some impetus. The last 5 overs might just change the fate of Svkm'S. And 76 at the end of 6 overs. And maybe 50-60 runs to it. And they might just make a match out of it. So over to Deva. And let's see whether the score is going to cross 130. It's going to be below 120. Or maybe touching 140 even. Anything can happen in the last few overs in a cricketing game. जी बिल्कुल, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अचानक भयानक। क्रिकेट का एक खेल, इसीलिए हम कहते हैं क्रिकेट का एक खेल, इसमें सारे प्रेडिक्शन फेल। किसी भी समय किसी भी टीम का पलड़ा भारी हो सकता है, सिचुएशन बदल सकती है, संभावनाएं बहुत है। संभावनाएं क्रिकेट के खेल में बहुत है। 6 गेंदों में 6 छक्के लगते हैं, 6 गेंदों में 6 चौके लग सकते हैं, 6 गेंदें डॉट भी हो सकती है। इसीलिए कहते हैं क्रिकेट का एक खेल अनिश्चितताओं से भरा है। 30 गेंदें बची है, 30 गेंदों में 50 या 60 रन भी बनते हैं तो 130 का आंकड़ा टीम आराम से पार कर सकती है। उस सोच के साथ, इंटेंट के साथ खेलना पड़ेगा। 130 स्कोर चेज करना है, अगर उस इंटेंट के साथ वो आक्रामकता अगर बल्लेबाजी में रहेगी तो बिल्कुल 130 स्कोर क्रॉस हो सकता है। और वही देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। फिर से एक बार हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस शानदार प्रतियोगिता में। जूटर प्रेजेंट इंटरनेशनल स्कूल डैड्स टूर्नामेंट, ये छठा पर्व है और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। ये गेंद डाउन द लेग साइड, अतिरिक्त रनों में इजाफा। शुरुआती समय से हमने देखा एसवी केम्स ब्लेजिंग स्ट्राइकर की शुरुआत ही खराब रही और उसके बाद छोटे छोटे अंतराल के बाद टीम विकेटें गंवाती रही और जो विकेटें गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है, क्योंकि 6 विकेटें छोटे छोटे अंतराल के बाद गिरी है। वरुण जैन तनप्रीत की जोड़ी मैदान है, इसे भी क्विक एक सिंगल यहाँ पे चुराया है। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, और ऐसे रन लेने के 2 बल्लेबाजों के बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है और बढ़िया तालमेल अभी नजर आया विकेटों के बीच में दौड़ते हुए। 1 रन वहां पे पूरा किया। इस बार बैकफुटर गया, अच्छा स्ट्रोक खेला, 1 रन मिलेगा। इसी 1 रन की मदद से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 81 रन पे पहुंच चुका है। 120-130 रन का आंकड़ा पार करने के लिए अभी भी यहां से आगे 40-50 रन की जरूरत है। अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट क्षेत्र में, वहां पे मुझे लगता है एम्ब्रिश वहां पे है और एम्ब्रिश ने अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि स्क्वायर लेग की दिशा में एक शॉट खेला था, उसको बेहतरीन तरीके से तेज दौड़ लगाई थी और पैर से गेंद को रोका था। टीम के लिए कुछ रन जरूर बचाए थे और अभी अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन वहां पे, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ। मोहसिन जिनका पहला ओवर बहुत अच्छा रहा था, इस बार आ गया है कदमों का इस्तेमाल, फुल टॉस बनाया गेंद को और हवाई फायर गेंद को भेजा है लंबे सफर पे, हवाई यात्रा पे, सीमा
रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बहुमूल्य रन्स है ये, बहुत ज़रूरी रन्स है टीम के लिए। बड़े शॉट की दरकार थी, तेज गति से रन बनाने की ज़रूरत थी, और बिल्कुल ज़रूरत को पहचाना है तनप्रीत ने और कदमों का इस्तेमाल करते हुए। और इसी बीच गैप में बढ़िया स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में। दो फील्डर के बीच में जो छोटा गैप था उसको तलाशा और गेंद तेज रफ्तार से तेज तीर की तरह निकल चुकी सीमा रेखा के बाहर। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 92 92 रन पे पहुंच चुका है और अभी 130 का आंकड़ा आसानी के साथ पार कर सकती है टीम, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं, ऐसे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जिस अंदाज में अलग तेवर में बल्लेबाजी कर रहे हैं तनप्रीत। ये वाइड गेंद लेग स्टंप के बाहर, थोड़ा सा दबाव यहां पे गेंदबाज के ऊपर दिखता हुआ। जिस तरह से पिछले दो शॉट लगे हैं, छोटी गेंद, ओवर समाप्त, डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त। 16 ओवर के बाद स्कोर है 93 रन, 16 ओवर के बाद 93, 93, 6 विकेट के नुकसान। इस ओवर में 17 रन आए, 17 रन एक अच्छा ओवर साबित हुआ है SVKM's ब्लेजिंग स्ट्राइकर के लिए। रनों की दरकार थी, बहुमूल्य 17 रन इस ओवर में आए हैं। जब गेंदबाजी करने के लिए टीम आएगी, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर खड़ा कर सकेगी, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस मिलेगा, डिफेंड करने के लिए थोड़ा सा आत्मविश्वास उनको मिलेगा। वरुण जैन और तनप्रीत की जोड़ी मैदान पे है, पूरी आशा इनके ऊपर टिकी हुई है, दोनों के ऊपर बड़े शॉट की दरकार। 9 गेंदों में 9 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं वरुण, और तनप्रीत 13 गेंदों में 17 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने एक छक्का एक चौका जड़ दिया था, पिछली ओवर में 17 रन बटोर लिए थे। और फिलहाल गेंदबाजी करने राहुल दोषी आए हैं, जिन्होंने नफी तुली, काबिल तारीफ, सही ठिकाने पे अच्छी गेंदबाजी की है। 3 ओवर में केवल 15 रन, एक महत्वपूर्ण सफलता उनके खाते में है। इस बार अपील तो की है, लेकिन इस अपील का अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं है। डॉट बॉल के साथ शुरुआत अच्छी रही 17वें ओवर की राहुल दोषी के लिए, क्योंकि डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है। अपील भी की थी, लेकिन उस अपील का अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। डॉट बॉल, स्कोर 93। इस बार फ्रंट फुट पे खेला हुआ शॉट, इंतजार किया गेंद का और लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया। 1 रन जरूर मिला है। यही करना होगा, जब बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं मिलता है, इक्का दुक्का के साथ भी काम चलाना पड़ेगा। स्कोरबोर्ड को आगे लेकर चलना बहुत जरूरी है, स्ट्राइक रोटेट करते रहना बहुत जरूरी है। तनप्रीत फिलहाल स्ट्राइक पे है, आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, अलग तेवर में, अलग अंदाज में, जिस तरह से पिछली ओवर में बल्लेबाजी की थी। फिर से एक बार धीमी गति की गेंद, इतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, गेंदबाज ने खुद गेंद को रोका है फॉलो थ्रू में, और डॉट बॉल। इस ओवर पे अब तक 2 डॉट गेंदें, केवल 1 रन आई है अब तक 3 गेंदों में। अच्छी ओवर साबित होती है राहुल दोषी की, जिस तरह से गेंदबाजी की है पिछले 3 ओवर उनके स्पेल के, उसी लय को बरकरार रखते हुए फिर से एक बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है, कवर पॉइंट के बीच में गेंद जा रही है, वहां पे फील्डर है, जब तक गेंद के ऊपर आएंगे 1 रन आसानी के साथ पूरा।
और क्लीन बोल्ड, बेहतरीन गेंद, बिल्कुल जड़ पे गेंद को गया, गेंद जाकर लगी बिल्कुल स्टंप पे और ये 7वें विकेट का पतन। वरुण जैन 12 गेंदों में वरुण जैन जिन्होंने बनाए 12 गेंदों में 10 रन, एक चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। छोटी सी पारी खेली लेकिन ये बहुमूल्य रन्स थे टीम के लिए, 10 रन की पारी। हिरेन पटेल स्कोर 95 for the loss of 7 after 16.5. अभी भी 19 गेंदों का खेल बचा है, 19 गेंदों में 19 रन भी आते हैं, रन बॉल भी आते हैं तो 120 के आसपास का आंकड़ा टीम पार कर सकती है। इस बार हल्के हाथों से खेला, कोई मौका नहीं रन के लिए। हिरेन पटेल नए बल्लेबाज मैदान में है और अभी यहां से आगे तनप्रीत के पास ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रहेगी तो बिल्कुल स्कोर तेजी से आगे बढ़ सकता है। हिरेन के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि एक स्ट्राइक रोटेट करते, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक तनप्रीत को देने का प्रयास करे। नाइन्टी 95 रन और गेंदबाजी करने आए हैं एजाद। एजाद के स्पेल का ये तीसरा ओवर है, पारी का 18वां ओवर है। एजाद के स्पेल में अब तक आए हैं 11, एक महत्वपूर्ण सफलता उनके खाते में है। नाफीतुली गेंदबाजी इन्होंने भी की है, लगभग सारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है ट्रूली मैरियंस के, क्योंकि कम से कम रन पे रोकने का प्रयास किया। 95 रन 17 ओवर के बाद बची हुई 18 गेंदों में कितने, यहाँ पे बढ़िया शॉट, बिल्कुल थाई पे लगी है फील्डर की गेंद। ऐसी फील्डिंग करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि ये बॉल अगर लगती है तो बिल्कुल जोखिम भरा हो सकता है। एक रन के साथ शुरुआत 18वें ओवर की। यजदा के स्पेल का तीसरा ओवर टीम के लिए 18वां। बढ़िया गेंद, रफ्तार वाली गेंद, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल। और हीरे नए बल्लेबाज मैदान पे है, 2 गेंदे खेले, 2 डॉट गेंदे है। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक तनप्रीत को देने का प्रयास करना होगा क्योंकि सेट हो चुके हैं, समय लिया है, 16 गेंदें खेली है, 19 रन बनाए हैं, उनके बल्ले पर ठीक से गेंद आ रही है। और यहाँ पे बल्ले का किनारा लिया, विकेट कीपर से दूर रही गेंद और सीधी रफ्तार से निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तेज गति की गेंद थी, खेलना चाहते थे आगे लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेके विकेट के पीछे सीधे निकल गई सीमा रेखा के बाहर। और ये बहुमूल्य रन्स है, वेरी इंपॉर्टेंट रन्स फॉर SVKM's ब्लेजिंग स्ट्राइकर्स। 100 रन टीम के पूरे हो चुके हैं, 100 अप फॉर द टीम, सेंचुरी अप फॉर द टीम। अभी 15 गेंदों में 30 रन अगर टीम बनाती है तो 130 का आंकड़ा। ये छोटी गेंद कवर क्षेत्र में खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद है, मिड ऑन की दिशा, माफ कीजिए, मिड ऑफ की दिशा में गेंद गई है, फील्डर है वहां पे दायरे के अंदर।
जिन्होंने आसानी से गेंद को रोका, फेंका, 1 रन पूरा। अभी सेट बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे। तनप्रीत स्ट्राइक पे है, जिन्होंने 16 गेंदों में 19 रन की पारी खेली है और उनके ऊपर बड़ी दारोमदार है, जिम्मेदारी है, टीम की आशा है उनके ऊपर कि बची हुई कुछ गेंदों पे बड़े स्ट्रोक देखने को मिले, बड़े प्रहार देखने को मिले। बेहतरीन स्ट्रोक, 1 रन जरूर मिलेगा क्योंकि फील्डर वहां पे है। अभी भी 13 गेंदें बची है इस पारी की, पहले इनिंग की 13 गेंदें शेष है और क्या कर पाएंगे विशेष बल्लेबाज देखना होगा। फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक, फील्डर है, जब तक गेंद के ऊपर आएंगे 2 रन पूरा करने का मौका है, यहां पे रनआउट का मौका हो सकता है लेकिन देखना होगा। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, तेज दौड़ लगाई विकेटों के बीच में, ऐसे लग रहा था कि रनआउट हो सकते, करीबी मामला हो सकता है, लेकिन विकेट कीपर गेंद को कैरी करने में असफल रहे और मौका मिला हिरेन को क्रीज में पहुंचने का और इस 2 रन की मदद से स्कोर 104 रन पे पहुंच चुका है। 18 ओवर के बाद 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर 104 रन। बिल्कुल अभी प्रयास करेंगे दोनों बल्लेबाज हवाई फायर करने का, बड़े शॉट खेलने का, क्योंकि ज़रूरत है रनों की, तेज गति से रन आने चाहिए। आखिरी 12 गेंदों का खेल शेष है। गेंदबाजी करने आए हैं अमरीश, जिन्होंने बढ़िया फील्डिंग भी की है, हमने उनको देखा है फील्डिंग करते समय। अमरीश के स्पेल की आखिरी ओवर, छोटी गेंद और गेंद जा रही है, फील्डर लंबी दौड़ लगाई, फील्डर ने गेंद को रोकने का प्रयास, एक हाथ से गेंद को रोका है और जब तक थ्रो करते पूरा पूरा समय था 2 रन पूरा करने का। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। शुरुआत अच्छी हुई है 19वें ओवर की, 2 रन के साथ 106 रन। बिल्कुल दिमाग में यही चल रहा हो 130 का आंकड़ा टीम पार करे, उस लिहाज से अगर बल्लेबाजी करते हैं, उस सोच के साथ, उस इंटेंट के साथ अगर बल्लेबाजी करते हैं, बिल्कुल 130 का आंकड़ा टीम पार कर सकती है। आगे आए, बेहतरीन स्ट्रोक, फील्डर वहां पे है और तनप्रीत के बल्ले से निकला हुआ एक करारा स्ट्रोक, फिर से एक बार मैं कहूंगा बहुमूल्य रन है। उन्नीस गेंदों में 26 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 26 ऑफ 19, उसमें 1 लंबा छक्का और 2 करारे चौके। बढ़िया बल्लेबाजी, टीम की जरूरत के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी कुछ गेंदें बची है, जरूर बड़े शॉट की दरकार है और खेलते हुए बड़े शॉट। तनप्रीत इस बार हवा में जरूर है, लेकिन फील्डर दायरे के अंदर, गेंद जा रही है तेज रफ्तार से सीमा रेखा की तरफ, क्या रोकने में सब, बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग, लाजवाब, शानदार फील्डिंग, अच्छा स्ट्रोक खेला था लेकिन उससे भी बेहतरीन फील्डिंग एजाद की तरफ से। गेंद का पीछा किया, तेज दौड़ लगाई और गेंद को रोका, फेंका, 2 रन टीम के लिए जरूर बचाए। 3 गेंदें हो चुकी इस ओवर में, 8 रन आए हैं
अभी 3 गेंदें बची है। 15-16 का ये ओवर हो सकता है अगर 2 बड़े हिट अगली 3 गेंदों में आए। 112 पे पहुंच चुका है स्कोर, और 130 का आंकड़ा ऐसे लग रहा है टीम पार कर सकती है, क्योंकि बची हुई 9 गेंदों में 18 रन अगर बनाती है ये जोड़ी तनप्रीत और हिरेन पटेल। ये गेंद डाउन द लेग साइड, 1 रन। हिरेन रन लेना चाहते थे, ये जोखिम भरा रन हो सकता था, टीम की मुश्किलों में इजाफा हो सकता था, लेकिन अच्छी सोच में कहूंगा तनप्रीत की तरफ से वापस भेजा हिरेन को, और स्ट्राइक उनके पास रखी है, क्योंकि वाइड गेंद इसे 1 रन अतिरिक्त मिल चुकी है। अभी भी 3 गेंदें शेष है, 9 रन इस ओवर में अब तक आए हैं। इस बार मिलेंगे जरूर, इस बार रन मिलेंगे, दूसरे के लिए निकल पड़े, क्या यहाँ पे रन आउट का मौका है? और बिल्कुल यहाँ पे वाइड +2, इस वाइड +2, इसे 3 रन मिलेंगे, बिल्कुल जरूरी रन चाहिए टीम के लिए। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के बीच में तेज दौड़ लगाई, और तालमेल बहुत बढ़िया है दोनों के बीच में। जरूर पिछली गेंद पे, वाइड गेंद पे जरूर रन लेना चाहते थे हिरेन, लेकिन तनप्रीत ने उसको वापस भेजा, और इस गेंद पे बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, ये बहुमूल्य रन है टीम के लिए। जितने रन आप बना सकते हैं बटोर लीजिए, जब गेंदबाजी करने आप आएंगे तो बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, डिफेंडेबल स्कोर खड़ा हो सकता है। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट! Beautiful stroke that was, straight to long gone, no chance for a fielder. The score moves on 120. और जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे 130 का आंकड़ा, अब बिल्कुल आसानी के साथ टीम पार कर सकते 130, और यहाँ से आगे 10-15 रन भी बनते हैं बची हुई 8 गेंदों में, 130-35 का आंकड़ा टीम पार कर सकती है। और जिस तरह से तनप्रीत बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुश्किल नहीं है, 130-35 आसानी के साथ ये 135 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। ये देखिए, बढ़िया बढ़िया शॉट, बिल्कुल तारीफ करूंगा मैं तनप्रीत की आखिरी बिल्कुल मौका नहीं गवाया, जहां पर इक्का दुक्का रन कर मौका बना था, बिल्कुल उस इक्का दुक्का को के साथ स्कोरबोर्ड को आगे चलाया है। फुल टॉस, और गेंद जा रही है मिड विकेट क्षेत्र में, 1 रन। बिल्कुल तनप्रीत निकले थे, रन लेना चाहते थे, लेकिन मैं कहूंगा फिर से जोखिम भरा रन हो सकता था। संयम रखा, वापस लौटे क्रीज में, अच्छी सोच, और 19 ओवर के बाद 122, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। पिछली जो 4 ओवर में 46 रन आ चुके हैं, क्योंकि तनप्रीत ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, अटैकिंग बल्लेबाजी की है, बड़े शॉट खेले हैं, आक्रामक बल्लेबाजी की है, और पिछली 4 ओवर में 46 रन, बहुमूल्य 46 रन मैं कहूंगा। अन्यथा ऐसे लग रहा था टीम 120 का आंकड़ा, 120 के अंदर, लेकिन फिलहाल के लिए 130 का आंकड़ा भी आसानी के साथ पार कर सकती है। गुड शॉट, बिल्कुल स्ट्राइक अभी रहेगी तनप्रीत के पास। तनप्रीत खेल रहे 33 गेंदों पे, अगर 3 बड़े हिट अगर लगते हैं तो हो सकते हैं 50 रन, 3 छक्के अगर लगते हैं, बिल्कुल 22 में 33 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं,
17 रन चाहिए उनको अर्धशतक पूरा करने के लिए। लेकिन जो पारी खेली है अभी तनप्रीत ने, बिल्कुल डटे रहे मैदान पे, अच्छी गेंदों को सम्मान के साथ खेला, बड़ा खराब गेंदों के ऊपर प्रहार किए। इस बार देखना होगा, हल्की सी अपील विकेट कीपर की तरफ से, लेकिन इस अपील का अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं है। डॉट बॉल, ये राहत वाली गेंद है एजाद के लिए, राहत भरी गेंद, क्योंकि डॉट बॉल। तेईस गेंदों में 33 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं तनप्रीत, जिन्होंने 3 चौके जड़ दिए, एक लंबा छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला है, और उसी की बदौलत टीम 123 तक पहुंच पाई है। अभी भी 4 गेंदें शेष है, 4 गेंदों में अगर 2 बड़े हिट, 1 या 2 बड़े हिट, 130 का आंकड़ा आराम से पार हो सकता है। बढ़िया गेंद, कोई मौका नहीं पड़ा शॉट खेलने का या सिंगल का भी मौका नहीं, क्योंकि गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद रफ्तार के साथ बल्लेबाज को बाय बाय करती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। लगातार दूसरी डॉट बॉल है इस आखिरी ओवर में। और फिर से एक बार बेहतरीन गेंद, ओ ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, शायद टप्पा पड़ने के बाद और बाहर निकली। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। एक एक रन बहुत जरूरी है एसवी केम्स ब्लेजिंग स्ट्राइकर के लिए। इस बार बल्ले का किनारा लिया, और ये गेंद गैप में चली गई है, थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। पिछली 7 से 8 ओवर में हम एक ही चीज का जिक्र कर रहे थे कि 130 का आंकड़ा अगर टीम पार करती है तो एक डिफेंड रिस्पेक्टेबल स्कोर हो सकता है, उसके साथ आप फाइट कर सकते हैं 130 के साथ, और वो स्कोर अभी नजर आ रहा है, क्योंकि 2 गेंदें बची है, 128 रन बने हैं, 2 गेंदों में 4 या 5 रन भी आते हैं, या एक बड़ा हिट भी आता है तो 135 भी बन सकते हैं। स्ट्रोक है यहाँ पे, दूसरी के लिए जरूर प्रयास करेंगे। क्या दूसरी रन पूरी हो सकती है? जब तक थ्रो आता है तब तक देखना होगा। बल्लेबाज आउट, और एक रन जरूर मिलेगा। यस, आखिरी गेंद है, क्या होगा? आखिरी गेंद पे इक्का, दुक्का, चौका, छक्का, या विकेट, या डॉट बॉल? तनप्रीत को प्यार से सब लोग टैनी बोलते हैं, जैसे डैनी है जैसे वैसे टैनी बोलते हैं। टैनी ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, खासा प्रभावित किया है, मुश्किल समय में आकर बड़े स्ट्रोक भी खेले, और ये गेंद निकल पड़े हैं। एक रन आखिरी गेंद पे। एक रन की मदद से 130 जो हम सोच रहे थे, जिसका जिक्र कर रहे थे, वो आंकड़ा टीम ने छू लिया। 130 रन बने हैं, और ये रिस्पेक्टेबल स्कोर हो सकता है, ये डिफेंडेबल भी हो सकता है। हमने अक्सर देखा है लो स्कोरिंग मैच एंटरटेनिंग होते हैं,
कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। आशा करते हैं इस मैच में भी एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और रनचेज देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
Yes, International School Darts Tournament match number 2. 130 is what they managed, and they start off well. Keep it straight, keep it simple. That's what the coach told them during the break. You keep the ball in the channel, not outside the off stump, but within the stumps. So it's a very fine margin. The best part of the wicket is it has some spice in it for the pace bowlers. The SVKMs may have got a modest total, but there is something for them to fight with. The last 5 overs, they fetched 54 runs. The most important aspect is the mindset. Like suppose you have chasing a score of 170, 180, this ball he would have swiveled across and tried to go for a boundary or so. But once the approach is different, smallish targets, you tend to play it differently. The English have a different approach. The Australians have a different approach. Remember the finals in the 2003 World Cup where Pakistan managed a meager total. In fact, not 2003. It was India which was there in 2003. The preceding year, Pakistan was smashed by the Australians when they were chasing a score of around 130, 140 in the finals. So, but all the balls right on spot. That's what is expected in the first over. A big appeal, a vociferous appeal, but to no effect. But good pressure applied in the first over. That's what the team was expecting. You may have the best possible resilience, you may have the good mindset of staying on the wicket, but once you play 3 dot deliveries, your patience is going to get a big jolt after that. Let's see what he does. 4 dot deliveries in a T20 game. That is not the ball you had to bowling after 4 consecutive dot balls. Short ball, he swiveled across and swiped it across the mid wicket region. Not the right length to bowl after bowling the balls in the right length. The previous ball even was a little short outside the off stump. This one was on middle and leg, pitch short, and it sat up nicely to be hit and was asking to be hit, and he hit it beautifully in that mid wicket. In fact, nicely dealt with. So the batsman would get a lot of confidence. There was some kind of mini pressure being developed on the batter, but that has been released by that boundary. In fact, that will increase the confidence of the batter now. Once you hit the scoring shot, a boundary, your confidence increases, man. Yeah, that is a good change of length. The score, both the teams at similar score, 4 runs at the end of over number 1. They managed 4 singles. This team has got a boundary in the first over. So Jatin to bowl from the amusement park end. He is their linchpin. When it comes to the batting or bowling, he is the crucial factor of this team. Let's see whether the all-rounder gets a few wickets.
Both the teams taking a lot of time to get their field absolutely right. It's a smallish total. They would like to put their best foot forward in order to defend this total. A smallish total, but they can fight with what they have got. This is a fabulous first ball. Oh, just popped out of his hand. Such a good fielder, Vishal is. He did everything right. He slid and he got it in the hand, but last moment the ball just popped out of his hands. This event is proudly sponsored by Hughes Segway. Hughes Segway co-sponsors Hide and Seek official snacking partner, Electrolush official hydration partner. And he is their main man. He almost got the wicket of the first ball. This apparels which you are seeing, Virat our official apparel partner, Dulali official beverage partner, Sporting Tools official equipment partner, and Trupti our official food partners. So Hughes Segway, the co-sponsor of this event, Hide and Seek official snacking partner, Electrorush official hydration partner. So all top brands associated with this tournament. Zooters always has been a prime event management team, and it has been growing leaps and bounds, setting the standards in the industry. Cricket always has been the focal interest of everyone. It's one of the biggest industries right now, the sports industry. Bangalore, they say they have 75 grounds on which the amateur cricket is played, and it's always good to play your favorite sport. Oh, that just went into that no man's land. That's the difference between the two teams now. The catch is going away, and previously when the SVKMs played, the catches were going straight to the fielders. In fact, they bowled really well and they fielded exceptionally well. Truly Marians, and they were so excited to field, and that's what the energy rubs one fielder. If the fielder fields well, the other also get the same energy to do the same stuff. This is so well played. This will boundary. What a shot that is! Played off the front foot into the covers. He did not try to place it. He did not try to punch it. He smashed this one. So that was hit with brute force. So some raw power into that shot. 10 without loss. We are into the second over. This man wants to finish it off early. He wants to play some shots. That's what he was in the pursuit to get quick. Ice on the ball. Oh, again popped out. Two catches being dropped. So Vidyut is the one who can go for big shots. He's known for big hittings. If he stays there, even he might clear this playing area which is over here, the pavilion and all. Into the covers also he can go. But this man can make a difference. This man can make a difference. So Vidyut's wicket is going to be important. Vidyut has got a couple of boundaries to his name. And with that, the score moves on to kitna? 11 runs. So 11 runs on the scorecard. The 4 runs in the first over, 7 in the second. Outside the off stump. The score moves on to a dozen now. Vidyut is playing with fire. He's going for his shots. That's what his natural game is. But trying to be ultra aggressive. If they lose a couple of wickets, maybe 3 wickets, 2 wickets in the power play, the game is going to take some interesting twists. It is their match to lose now. They cannot be giving this one away after restricting the opposition to a meager total. So it's a fair delivery. That's what the umpire is saying.
That's down the leg side. Good work by the wicket keeper. Tried to stop that one, but that is racing away for. Yeah, that would be three wides. This is where they need to control. They have a smallish total to defend, and this all runs would be welcomed by truly Marians. Truly Marians would truly accept this with both hands. So 15 runs on the scorecard, 4 runs in this over so far. 4 runs in the first over, 7 in the second, and now 4 runs in this over so far. A lot of energy, a lot of enthusiasm. This synergy with which you field that always helps your mates to perform better. The one best part about the dance tournament, whatever failures or success, they celebrate them together. That's what team game is. That's what cricket teaches you. You enjoy your small successes. Oh, what a shot! This is Vidyut at his electrifying best. His name is Vidyut, and he is an electrifying player. He is known for such shots. That was just an extension of the arms. He wasn't to the pitch of the ball. He was slightly away, in fact, and to hit that ball straight down the ground, it takes a lot of power and punch. But that's how typifies about the wicket even. Nothing much about the bowl for the bowlers in it. It's a wicket. It's as flat as you can get, almost like the expressway on which you came on. But it will skid the dew on the ground. And they get the big man. Yes, yes, they do get the under edge straight to the wicket keeper. He was playing with fire with youth. He is an electrifying player, but this time his wings are clipped. That's a big wicket because this man could have finished this match very early. They could have gone home and celebrated this victory very early if Vidyut stayed there. Look at the huddle which they have got into. They know the importance of this man. Vidyut gets out, it's a big wicket. There are a couple of big hitters. Vidyut was one of them. He gets out in the process of going for big runs. So Pankit couldn't do much with the bat in the hand. He is their premier opening batter, but he makes it up with a good catch of the opening batter. Of course, he has the gloves in his hand, but they had to hold on to something because they dropped a couple of chances, and this man could have been very, very dangerous against them. He hit a few fantastic boundaries, some strong hits into the covers and straight down the ground, but that one wicket give them the boost which they needed. Yeah, they needed that. They needed that. They needed a couple of more wickets in the first 6 overs. They need minimum 3 in the power play just to make a match of it. Just for us to make some good view of this match. Down the leg side, good work by Pankit again. He saved 5 runs for his team. In fact, 4 runs. That's a wide. Was it slightly away from the wide? He chased the wide one. Feeling that bat on the ball. That's what the new batsman always does. You feel that ball on the bat, and you feel better. That connection is more important.
This is so very well done. What a shot this is. And it has gone all the way. It was hit with brute power. Saurabh generally is he's a safe fielder, but this time he makes a mistake. That was traveling. He batted well, but this time he couldn't hold on to the ball, which was going at a rapid pace. So the score at the end of this over is 24-24 for the loss of Vidyut. So it's 24 runs. They have lost a wicket, but the scoring rate has been really good. It's always good to it's always good to approach a smallish total like this, attack it. But he is their premier bowler who hasn't got any support from his fielder though. They missed out on a couple of chances. One was a good effort from Vishal Patil. The other catch was also a skyer which was put down. But that can always happen. These guys, their primary job is to work in their respective fields, make some money, make a lot of money. In fact, most of these guys are highly successful in their respective professions, whatever they take on. And cricket is their passion. As they say, they are born to play cricket and forced to work. That's what I love the tagline of Conti Titans, one of the teams in the leagues. Does it say pad first? It hit the bat, it hit the pad. Only question Jatin was asking, was it pad first? If it wasn't any bat on it, that would have been a very, very easy decision for the umpire. In fact, it hit the bat, so it made it relatively easier for him to take that decision. They need a couple of wickets and almost had another. He's creating chances, is Jatin. They play with a lot of spirit and the camaraderie between them. I've seen a lot of teams like not supporting each other that well, but this team is different. Svkm, they support each other to the hilt. Most teams do. And these two wonderful shots. This is the shot of the match for me. What a wonderful all around the carpet drive that was. It deserved what it got. It wasn't a bad ball, but the shot deserved a boundary. It has got a boundary. So 29 for 1 is what the score is. We are into the fourth over. The score at the end of over number 4 is 29-29 for the loss of Vidyut. Official hydration partner Electrolash, official apparel partner Virat, official beverage partner Dulali, official equipment partner Sporting Tools,
and our official food partner Strupti. So thank you all the guys for being associated with this tournament. All top brands, and this is a top tournament. Zooter is known for its perfection, its precision, and the best possible arrangement, best possible ambience for the best possible tournaments. That is well bowled off the back foot. Everyone wants to get associated, especially the choice of apparels. Also, you see the minutest of details and attention to the details which they say. Shishru does that and does it successfully in his tournament. He is a trendsetter. People do follow him, and this tournament is bound to be a good one. International School Darts tournament always has some attraction. So does 40 plus, and so does SMPL. 40 plus is the tournament which we love to be associated with. It is one of very exciting tournaments. But this one, even the darts tournament, gets the best out of most players. These guys, those who haven't had the opportunity to spend some time in their prime time when they were busy with their careers, this is the time where they are giving time to their passion. Straight to the fielder just for a single. That is beautiful. You turned away. It deserves more than one. In fact, it is just a single. The scores 31. That was way outside Doss. He went to chase that one. Oh, that's a wide. That is a right approach, though. Even if you miss out, you're going to get a wide. If you get some connection on it, a slash or an edge, that would have fetched him 4 runs. So, right approach, it's the smallest total. And if you're going for it, go for it and get some big shots in. So that even if you lose wickets, run rate won't be an issue. The wicket keeper creating that confusion. Some respectability. Tanpreet played well, and that is the reason they are in for some 130 runs or so. Last 5 overs, they got 54. Over number 15 to 19, they got 46. 76, which they got in 15 overs. The last 5 overs, the batters coming in at December 7, 8, 9 did the job for the team. That's outside off stump. That has to be a wide. Is given a wide. They should be trying to avoid this thing. They have a smallish total, and if they are going to give away wides like this, they're not going to help the team scores. In fact, he should be bowling within the stumps, not away from it. If they get a few wickets, they would be having a slight chance of winning this one. Score at the end of 5 overs is 34. 34 for the loss of 1 wicket. In pursuit of 131, they need 97 runs to win this one.
So the next few overs of the chase and the defense of this target will have Deva Devanand Landke. He is from Pune and also a data engineer who loves the game and loves commentating in Hindi. Let's hear it from Deva for the next few overs. Thank you so much, Santosh sir. वेलकम बैक. हाजिर है अब आपके लिए हिंदी कमेंट्री लेकर. ट्रूली मैरियंस अभी लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक बनाए 35 रन और केवल एक विकेट टीम ने खोया. अच्छी स्थिति में हम कह सकते हैं 5.2 ओवर के बाद 35 रन. अंजर चौगुले और चिराग शाह की जोड़ी है मैदान में. दोनों निजी 9 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. जतिन मेहता के स्पेल का ये तीसरा ओवर. यहाँ पे एक रन चुराने का प्रयास. डायरेक्ट हिट नहीं, थ्रो किया. तब तक एक रन लेने का प्रयास किया. एक रन आसानी के साथ पूरा. इस ओवर में अब तक आए हैं दो रन. छठे ओवर का खेल मैदान में चल रहा है. जतिन मेहता के स्पेल का ये तीसरा ओवर. 14 रन उनके स्पेल से आए हैं अब तक. चिराग शाह 9 रन बनाए 17 गेंदों में और अंजर चौगुले 9 गेंदों पे 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं. ये बिल्कुल आगे वाली लेंथ और इस गेंद को गैप पे खेला है. गेंद के पीछे फील्डर जरूर है. लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को. गेंद लेग स्टंप पे गेंद थी. पैर पर गेंद बिल्कुल उसको स्क्वायर की दिशा में खेलकर 4 रन वहां पे मिलेंगे. गेंद को भेजा सीमा रेखा के बाहर और 40 रन पे स्कोर पहुंच चुका है एक विकेट के नुकसान के ऊपर. SVKM's ब्लेजिंग स्ट्राइकर्स पहले बल्लेबाजी की और 8 विकेट के नुकसान के ऊपर 20 ओवर के बाद 130 रन उन्होंने बनाए. 131 रन का लक्ष्य ट्रूली मैरियंस के सामने रखा और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए एक विकेट गंवाकर अब तक बनाए हैं 40 रन. फिर से एक बार यहाँ पे अच्छी रनिंग, अच्छी दौड़ विकेट के बीच में. क्विक सिंगल वहां पे पूरा किया. इस ओवर में अब तक 7 रन आए हैं. 5 गेंदें हो चुकी है और बिल्कुल सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिल रही है अंजर और चिराग शाह की तरफ से. किसी भी तरह से मौका नहीं गंवा रहे रन चुराने का. यहाँ पे गति में परिवर्तन. धीमी गति की गेंद थी. पिछली 5 गेंदें हमने देखी वो उस गेंदों में रफ्तार थी लेकिन ये आखिरी गेंद धीमी गति की और उतने अच्छी तरीके से खेला, सावधानी से खेला और डॉट बॉल के साथ छठा ओवर समाप्त हुआ है. 6 ओवर के बाद 41 एक विकेट के नुकसान के ऊपर. जो भी दर्शक इस मैच को जूटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे, लाइव विवरण सुन रहे हैं, उन सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से एक बार. जूटर प्रेजेंट इंटरनेशनल स्कूल डैट्स टूर्नामेंट ये छठा पर्व. इसमें स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है. उन सभी स्पॉन्सर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. उनके नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा. यूज़ सेगवे को स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के. बहुत बहुत धन्यवाद यूज़ सेगवे. हाइड एंड सीक ऑफिशियल स्नैकिंग पार्टनर है. इलेक्ट्रो रश ऑफिशियल हाइड्रेशन पार्टनर है. विराट ऑफिशियल अपीयरल पार्टनर है. दुलाली ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर. स्पोर्टिंग टूल्स ऑफिशियल इक्विपमेंट पार्टनर और तृप्ति ऑफिशियल फूड पार्टनर. बहुत बहुत धन्यवाद सभी खिलाड़ियों की तरफ से. यूज़ सेगवे, हाइड एंड सीक, इलेक्ट्रो रश, विराट, दुलाली, स्पोर्टिंग टूल्स एंड तृप्ति. थैंक यू सो मच. फिलहाल लेकर चलते हैं फिर से एक बार आपके मैदान पे नए गेंदबाज
देवेंद्र सैनी देवेंद्र सै देवेंद्र सैनी जो है गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। देवेंद्र सैनी के स्पेल का ये पहला ही ओवर है और अभी छोर बदला गया है। 6 ओवर के बाद दूसरी 6 से गेंदबाजी हो रही है। और स्ट्राइक पे चिराग शाह जो 14 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं 19 गेंदों में। अब पहली गेंद डाउन द लेग साइड, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। तेज रफ्तार वाली ये गेंद थी, तेज करने का प्रयास। और अगर ये गेंद लाइन में होती तो बिल्कुल ये फुल टॉस होती, लेकिन ये लेग स्टंप के बाहर थी, इसी कारण वाइड का इशारा किया अंपायर ने। दूसरी शॉट, बेहतरीन स्ट्रोक, उतनी अच्छी फील्डिंग, गुड स्टॉप। पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद है जिन्होंने अच्छी तरीके से गेंद को रोका। दूसरी रन के लिए कोई मौका नहीं है और दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्ट। इक्वेशन हम आपको बताना चाहते हैं, 83 गेंदों में 88 रन की ज़रूरत है अभी भी यहाँ से आगे जीतने के लिए, ट्रूली मेरियंस के लिए। और ऐसा लग रहा है ये स्कोर धीरे धीरे इक्का दुक्का के साथ ये टीम पार कर लेगी, क्योंकि कोई जोखिम भरा रन अभी तक इस दोनों बल्लेबाजों ने नहीं लिया है और जोखिम भरा शॉट भी अभी तक देखने को नहीं मिला है। पिछले 2-3 ओवर में अगर देखा जाए, इन दोनों ने एक पार्टनरशिप, साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश की है। इस बार सीधे बल्ले से लवली शॉट, फील्डर वहां पे जरूर है लेकिन ये बहुत बेहतरीन शॉट था, बिल्कुल सीधे बल्ले से। इस बार लेंथ में परिवर्तन, बिल्कुल 1 रन मिलेगी जरूर। लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई। और ये जब शॉट खेलते हैं चिराग शाह, जो फ्रंट फुट है बिल्कुल सीधा रहता है, थोड़ा सा बाहर निकालते हैं गेंद और सीधे बल्ले से खेलते हैं। ये बढ़िया शॉट है। इसके पहले वाला शॉट दर्शनीय स्ट्रोक था, हालांकि वैल्यू ज़्यादा नहीं मिली उस शॉट की, लेकिन दर्शनीय स्ट्रोक था। फिर से एक बार बेहतरीन स्ट्रोक, उतनी बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, वेरी गुड स्टॉप, फॉलो थ्रू में, नो चांस फॉर रन, डॉट बॉल। नो बॉल का इशारा किया है अंपायर ने, माफ कीजिएगा। और नो बॉल का मतलब है बल्लेबाज को लाइसेंस मिलेगा बड़ा शॉट खेलने का, खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं, बड़ा शॉट खेलने का मौका है, फ्री हिट का इशारा। प्रयास तो जरूर किया था, लेकिन ये रफ्तार वाली गेंद, ये ब्लाइंडली खेलने का प्रयास, अभी इस गेंद के ऊपर बिल्कुल गेंद की लाइन और लेंथ को नहीं पढ़ पाए और ब्लाइंडली इस शॉट को खेला, बस बल्ला चला दिया। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर लैंड हुई और डॉट बॉल। ये फ्री हिट की गेंद का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज अंजर चौगुले। इस गेंद को लेट खेला, बिल्कुल आने दिया, 1 रन पूरा किया, दूसरी के लिए मौका नहीं है। अच्छी रनिंग और उतनी अच्छी फील्डिंग थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन शॉर्ट थर्ड मैन वहां पे दायरे के अंदर। इस ओवर में 6 रन आ चुके हैं अब तक और अभी चैलेंजिंग ओवर भी बचा हुआ है। उस ओवर का भी लाभ उठा सकते हैं ये दोनों बल्लेबाज, लाभ ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। 10 ओवर तक ये चैलेंजिंग ओवर पूरा करना होता है, अन्यथा ये 10वां जो है मैंडेटरी हो जाएगा, जिसमें जितना भी रन का चैलेंज होगा उससे डबल रन मिलेंगे। अगर चैलेंज पूरा नहीं कर पाए बल्लेबाज तो 0 रन मिलेंगे, 0 रन मिलेंगे। इस बीच हल्के हाथों से शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में खेला, 1 रन पूरा, ओवर समाप्त। 7 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 48 रन।
अभी भी 83 रन की ज़रूरत है, 78 गेंदें बची है। ये लक्ष्य आसान सा नज़र आ रहा है, लेकिन फिर से हम कहते हैं कि क्रिकेट में कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। आसान सा लगने वाला लक्ष्य मुश्किल हो सकता है। जल्दी जल्दी अगर दो या तीन विकेट चटकाने में सफल होती है एसवी केब्स के गेंदबाज, तो बिल्कुल ये रन चेस जो है, आसान सा रन चेस, ये मुश्किल साबित हो सकता है। विकेट चटकाने होंगे एसवी केब्स ब्लेजिंग स्ट्राइकर को। अगर इस मैच को जीतना है तो बिल्कुल विकेट चटकाने होंगे। छोटे छोटे अंतराल के बाद विकेट चटकाने बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे एक बड़ी पार्टनरशिप बनती है तो बिल्कुल ये छोटा सा रन चेस आसान हो जाएगा ट्रूली एम्बेरियंस के लिए। सौरभ डागा गेंदबाजी करने आए हैं। फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन। देवेंद्र साइनी जिन्होंने एक और पूरा किया, और अभी नए गेंदबाज सौरभ दागा के हाथ में गेंद थमाई है। कप्तान ने उनके ऊपर विश्वास जताया, और उनके स्पेल का ये पहला ओवर है। अब तक पूरे हो चुके हैं 7 ओवर, 48 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान के ऊपर। और इस बार गेंद लेग स्टंप के बाहर, और विकेट कीपर से भी थोड़ी सी गलती, गेंद को नहीं रोक पाए। फिलहाल दूसरी रन पूरा करने का प्रयास। तीसरी रन क्या पूरा कर सकते हैं, जब तक थ्रो आता तब तक 2 रन। वाइड +2, वाइड +2 के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं ट्रूली मेरियंस के लिए। 50 अप, 51 रन स्कोर बोर्ड पे है, और अभी भी 80 रनों की दरकार है 78 गेंदों में। आ, बिल्कुल बल्लेबाज ने रुख किया था अंपायर की तरफ वाइड के लिए, लेकिन ये गेंद वाइड लाइन के अंदर थी। इसी के लिए ये फेयर डिलीवरी है। अच्छी गेंद, दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। गेंद रफ्तार इतनी नहीं है, लेकिन बल्लेबाज से दूर, वाइडिश यॉर्कर जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल अच्छी गेंद। आपके पास रफ्तार कितनी है, इससे ज़्यादा आपके पास गेंद पे एक बार नियंत्रण कितना है, ये इस बार अच्छा शॉट मिड ऑफ की दिशा में, बढ़िया फील्डिंग, गुड स्टॉप, वेरी गुड स्टॉप। 1 रन जरूर मिला है। पहली गेंद वाइड थी, लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया है, नियंत्रण दिखाया गेंदबाजी में सौरभ डागा ने। वाइड के बाद लगातार 2 डॉट, और उसके बाद एक सिंगल रन आई है। अब तक का 4 रन इस ओवर में। अंजर 14 गेंदों पे 12 रन पे बल्लेबाजी कर रही थी, और ये गेंद जोरदार अपील की थी, और उस अपील को मिली है दाद। अंपायर ने उस अपील को स्वीकारा है, और कॉट बिहाइंड। एक बड़ा झटका, एक बड़ी मछली जाल में दूसरे विकेट का पतन। 52 रन पे ट्रूली मेरियंस ने दूसरा विकेट गंवाया। अंजर चौगुले जिन्होंने, ऐसे लग रहा था अभी सेट हो चुके हैं, 14 गेंदें खेली थी, थोड़ा सा समय लिया था, लेकिन कॉट बिहाइंड, एक लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को छेड़खानी करने का प्रयास, शॉट खेलने का प्रयास, और गेंद ने बल्ले का किनारा लिया, विकेट कीपर के दस्तानों में जाके लैंड हुई, और अंजर को पवेलियन में लौटना पड़ा। दूसरे विकेट का पतन 52 रन पे। 7.4 ओवर अब तक हो चुके हैं।
और बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं हर्षित दारजी, और हर्षित के लिए सौरभ डागा तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। हर्षित के लिए पहली गेंद, और आते ही पहली गेंद फुल टॉस की है हर्षित के लिए, और हर्षित ने उस गेंद को लॉन्गर क्षेत्र में खेला। फील्डर है दायरे के बाहर, जिन्होंने गेंद को रोका, फेंका। तब तक 1 रन के साथ खाता खुला है हर्षित का। फिलहाल स्ट्राइक पे चिराग शाह। चिराग अब तक 25 गेंदें खेल चुके हैं, 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। 18 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये सेट बल्लेबाज है जिनको अंत तक खेलना होगा, बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, दारोमदार है। और ये कड़क शॉट, बेहतरीन शॉट, फुल टॉस गेंद है और उसका पूरा फायदा उठाया, इस गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और सेट बल्लेबाज को आप फुल टॉस गेंद करोगे, अब बिल्कुल उसके ऊपर बड़ा प्रहार, बड़ा स्ट्रोक, बड़ा शॉट देखने को मिलेगा। और पूरे 4 रन मिले। 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 57 रन पे, 8 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। और चिराग शाह पहुंचे 22 रन पे 26 गेंदों में। और इस बार गेंद जा रही है सीधे फाइनल की दिशा में, सीमा रेखा के बाहर। बिल्कुल लेग स्टंप की दिशा में गेंद थी, हल्का सा उछाल था और बस बल्ला लगाना था, दिशा दिखाने का काम किया लेग स्टंप के लाइन की गेंद को। और वहां पे फील्डर मौजूद नहीं है, फाइन लेग नहीं है, स्क्वायर लेग भी नहीं है, इसीलिए ये बहुत बड़ा गैप है, सुनसान इलाका बड़ा है। और उस सुनसान इलाके में गेंद को खेला 4 रन के साथ। शुरुआत 9वें ओवर की 4 रन के साथ स्वागत किया है तनप्रीत। स्कोर पहुंचा 61 पे, 61। बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी, शानदार वापसी, बिल्कुल आगे वाली लेंथ, गति इस गेंद में थी। टप्पा पड़ने के बाद गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर निकली और विकेट कीपर के दस्तानों में। जरूर खेलना चाहते थे लेकिन लाइन और लेंथ को समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। हर्षित नए बल्लेबाज है, थोड़ा सा समय लगेगा। 3 गेंदें खेल चुके हैं, 5 रन आए हैं 3 गेंदों में, एक बाउंड्री उनके बल्ले से देखने को मिली है। इस बार फ्रंट फुट पे डिफेंस किया, आगे वाली लेंथ, बिल्कुल जो अगला पैर बाहर निकाला, बैट और पैड बिल्कुल क्लोज, आखिरी तक नजर थी गेंद के ऊपर। बढ़िया डिफेंस। और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बिल्कुल फ्रंट फुट बाहर निकला था, लेकिन ये गेंद देखिए ऑफ स्टंप के बाहर वाली 5वें स्टंप पे गेंद थी और फ्रंट फुट निकल रहा है बिल्कुल मिडिल स्टंप पे, तो थोड़े से दूर रहते हुए गेंद से। लो फुल टॉस, कवर पॉइंट के बीच में गेंद गई है, फील्डर वहां पे है, जब तक थ्रो आएगा 1 रन का समय है दोनों के पास, और 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62। और ये 9वें ओवर की आखिरी गेंद है तनप्रीत के, और तनप्रीत की इस ओवर में पहली गेंद पे चौका है, तो उसके बाद लगातार 3 डॉट डिलीवरी उन्होंने की है, 3 डॉट गेंदें की है, बढ़िया कमबैक, बढ़िया वापसी, 5वीं गेंद पे सिंगल, इस बार हल्के हाथों से, और बढ़िया फील्डिंग, सुपर फील्डिंग, लाजवाब।
जोश देखिए, बिल्कुल उत्साहित है, जोश फ्री फील्डिंग वहां पे नजर आई। इसी तरह से फील्डिंग करनी होगी। सिंगल एक एक रन के लिए आपको बल्लेबाज को परेशान करना होगा। एक एक रन बहुत रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा स्कोर आपने खड़ा नहीं किया। 130 रन आपने बनाए हैं, 131 का लक्ष्य आपने रखा है ट्रूली मैरियंस के सामने, तो उस तरीके से फील्डिंग करनी होगी आपको। एक एक रन रोकना बहुत ज़रूरी है। वेलकम बैक। 10वें ओवर की शुरुआत, 10वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है, और ये 10वां ओवर बाय डिफॉल्ट ये चैलेंजिंग ओवर, चैलेंज ओवर जिसे हम कहते हैं। जैसे बॉक्स क्रिकेट में मैजिक ओवर होता है, जितने रन निकालेंगे उतने डबल मिलते हैं, लेकिन उसमें विकेट गिरा तो माइनस भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग है, जितने रन का चैलेंज दिया है, अगर उतने रन बनते हैं तो डबल मिलेंगे, अगर चैलेंज पूरा नहीं कर पाते हैं तो शून्य रन मिलेंगे। और इसके जो पहला मैच था बीडी रॉयल्स, अगर चैलेंज ओवर में उन्होंने 8 रन का चैलेंज दिया था, लेकिन 7 रन पूरे कर पाए थे, इसी के लिए उनको रन्स नहीं मिले। अन्यथा वो मैच का परिणाम अलग हो सकता था, बीडी रॉयल जीत भी सकती थी। तो ये मैच का नतीजा बदलने वाली ये ओवर है, कुछ भी हो सकता है। और बढ़िया स्ट्रोक, लंबी दौड़ लगाई है फील्डर ने, वहां पे 1 रन पूरा, दूसरा भी पूरा, क्या तीसरा पूरा कर पाएंगे यहाँ पे? गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के बीच में तेज दौड़ लगाई, और जब तक थ्रो आता है तब तक 3 रन आसानी के साथ पूरे किए हैं।
बिल्कुल 6 रन का जो चैलेंज रखा है सोच समझ कर रखा है, क्योंकि अगर ज़्यादा भी रखते हैं तो फंस जाता है कभी कभी मामला, जैसे पहली मैच में फंस गया था। और ये रन बॉल चैलेंज एक 12 रन मिल सकते हैं अगर एक अगली गेंद पे 1 रन पूरा होता है तो। ओ यहाँ पे देखना होगा, और बिल्कुल स्टंप के सामने, और इतनी हाइट भी इस गेंद में नहीं थी, बिल्कुल टप्पा पड़ने के बाद नीचे रही थी, और जोरदार अपील, इस अपील को अंपायर ने स्वीकारा, और चौथे विकेट का पतन। माफ कीजिएगा, यहाँ पे तीसरे विकेट का पतन हुआ है, थर्ड विकेट डाउन। और अभी नए बल्लेबाज, और नए बल्लेबाज है आदित्य, LBW के। अभी 3 गेंदें बची, और फील्डिंग देखिए, बिल्कुल अटैकिंग फील्ड से, सिंगल रोकने के लिए, 1 रन रोकने के लिए बिल्कुल मुझे लगता है सारे जो खिलाड़ी है वो दायरे के अंदर है। 1 रन रोकने के लिए, क्योंकि ये चैलेंज पूरा हो जाएगा 1 रन के साथ अगर ऊपर से खेलते हैं। और यहाँ पे देखिए, पॉइंट पे फील्डर नहीं था, पॉइंट की दिशा में उस गैप को तलाशा, और उस गैप में गेंद को भेजा, और 12 रन स्कोर बोर्ड में ऐड किए गए हैं। बिल्कुल इस चैलेंज को पूरा किया है, और 12 रन खाते में जुड़ गए हैं। 10 ओवर के बाद अच्छी स्थिति में टीम है, 74 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर, बढ़िया स्थिति में है ट्रूली मेरियंस, लक्ष्य का पीछा करते हुए 131 रन का लक्ष्य। और ऐसा लग रहा है कि ये रन चेस जो है आसानी के साथ पूरे कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता, क्रिकेट है, इसीलिए हम कहते हैं क्रिकेट का खेल, इसमें सारे प्रिडिक्शन फेल, हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए अच्छी स्थिति में है टीम ट्रूली मेरियंस, 10 ओवर के बाद 74 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब बिल्कुल अगले कुछ ओवर के लिए हम आमंत्रित करना चाहते हैं कमेंट्री बॉक्स में संतोष सर, स्वागत है आपका। अभी तक 74 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर, क्या स्थिति रहेगी, अगला रनचेस कैसा रहेगा, सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। संतोष सर, ओवर टू यू। यस, थैंक यू देवा सर। आखिर के 10 ओवर्स, और 10 ओवर्स में बनाने हैं 56 रन, उतने ही रन जितने आखिर के 5 ओवर्स में बनाए थे SVKMs की टीम ने। सो 10 overs in which to get 56 runs. SVKMs got those 56 runs in the last 5 overs. These guys have to get. So Tanpreet is the man who has been very good with the bat in his hand. He has bowled an over before this one, and he was hit for a boundary, but after that he made a comeback with 4 consecutive dot deliveries. Let's see whether Tanpreet can purchase a wicket. They need a few of them, in fact a lot of them, to want to get back to Indus. That was clearly bat and pad.
For a moment, I thought the umpire is going to raise his hand. The batsman would have had his heart in mouth after that. The beautifully flicked. Lot of confusion. There was a single in it. There was a single in it. He's a pretty good fielder of his bowling. Oh, that was a full toss, not taken advantage of. But they would be happy with whatever they are getting now. Right now, they want to finish this off. They won't be bothered about the run rate in the initial stages of the tournament. This is a tournament where we have 7 groups, and the 7 groups are divided into 4 teams each. That is 28 teams divided into 7 groups and 4 teams each in the group. The first Glani United. Oh, that was really close, but that kept low. That wasn't an easy chance. He has kept so well, has Pankit. There was an edge, but it was a very difficult chance. So 53 runs needed in the next 9 overs. 54 balls, 53 runs to win. Right now, truly, right now the truly Marians have in the game in the pocket all the way. But you never know. It's a game in which anything can happen. They need some inspiration to the SVKMs. 90% of the match is with the chasing team right now, but we never know. We never know. A few wickets here and there, SVKMs would be right back into this one. For that to happen, they need to have someone to bowl some pretty good overs. They need a couple of maidens if they want to come back in this one. 53 runs in the next 54 balls. Oh, that just flew off. Not a good start by Patil. The ball has just stopped over there. Maybe the dew a big factor. Will they go for the third wide? In fact, they have got 3 wides. That will reduce the total. They need 50 more now. Exactly 50 more in the next 54 balls. Those 3 wides are going to help.
Again a miss by the wicket. The ball might have slipped off his hands. Again the ball has gone and stopped over there. This time it has to be a 3. Yes, this is a 3 for them. In fact, 4 wides. 4 wides. And the score moves on to 85 now. 85 for 3. 7 runs without a ball being bowled. In fact, Sachin Tendulkar is the only bowler to get the wicket of the 0th ball. First time ball he bowled, that was a wide, and he got a wicket. So, without bowling a ball, he has conceded 7. He is the only bowler in the history of cricket who has got the wicket of the very, in fact, the 0th ball. First ball which he bowled, it was a wide, and he got stumping on that ball. In fact, not Sachin, it is Virat Kohli. And our scorer has got me that correction done. Virat Kohli is the only bowler, not Sachin Tendulkar. Shravan made me correct that fact. It was Virat Kohli who got the wicket of the 0th ball. And the only cricketer in the world to get a wicket before that official first ball is bowled. So Virat is a special guy with special record. Whilst the under 19 captain, clearly he wasn't one of the most talented one. There were so many batsmen who were much better than him, but Virat had that fire in him during that World Cup. And nobody had dreamt that this man would go and become one of the greatest ever for India. So he gave away 7 runs, this man. He needs to pick a few wickets, Patil. He is a very good all-rounder. Today not his day. And the ball shot not coming out. The dew is a big factor. You need to learn how to bat or bowl in different conditions. This condition, this ground, this weather needs some adjustment. They need exactly 43 more runs to win this one. That was way too short. Oh, well tried. Almost had it in one hand. Almost had it in one hand. A good effort. It was very difficult how far that ball is going to go. He made a great effort. Almost. They need exactly 39 more runs to win this one. The score's 92 now. 92 runs. There was very difficult to judge the catch, the way, the pace of the ball. Varun did a valiant job of getting close to that ball. Almost pulled off a fantastic one-handed, left-handed catch. That would hurt him though. It's a kind of weather. Finally, Vishal getting the ball right on the right spot. He bowled a lot of full tosses. He bowled a lot of balls down the leg side. This one he got it right. Gave away a lot of runs in this over so far. So Vishal getting it right, not at the beginning of the over, but to the fag end of it. They need exactly 39 runs to win this one. So 92 in 12 overs, 8 overs in which to get these runs. They need a couple of maidens, whereas the chasing team would like to finish it off early. That was bowled very quickly.
That ball kept a bit low. Pankit has done a great job. He has got hurt a couple of times. The ball has been slightly skidding. So 39 runs needed of the next 46 balls. It's going to be an interesting chase. If they continue to ball it that way, because the spinners are getting some help, they are getting some skid off the wicket. That's way too wide. They need 38 more. He wanted to play the ram shot. It missed everyone. It has gone for 5 wides. Those 5 wides are going to hasten up the scoring, going to expedite the chase. The score is 98, 98 for 3. They need exactly 33 runs to win this one now. They're trying to put up a spirited chase. Nothing has gone right for this team. Generally, when you associate it as SVKMs have very high success rate in this tournaments, especially that tournament. SVKMs, we have lot many teams and who perform really well most of the times. Today, things have not been their way. They need 33 runs of the next 45 balls. 30. They're trying to get back into the contest, but wides won't help. Pankit has done a good job behind the wicket. They have played well in patches, but they have made a lot of mistakes also. Whilst in batting and now in bowling even, they've conceded almost 13 to 14 runs in the last few overs in form of wides. So many extras. I'll just confirm the number of extras which they have bowled. Uh, 31 extras in that total, almost 25% of the runs in extras. Now that's a big percentage when you consider a T20 encounter with a smallish total. That is beautifully done. Using the wrist and just ramping it up into that fine leg, square leg region. And that would be 1, 2, 3 runs. The 3 runs added to the tally, that will take the chase little closer. 101 for the loss of 3 wickets. 101 for the loss of 3 wickets. 30 needed. 30 runs needed in the next 7 overs. Not support him whilst fielding. A couple of chances were put down in the very first over which he bowled. So Jatin Mehta, this man can still create some magic. Not that the
chase is tough now. 7 overs and just 30 runs to get. But this man can pick up a few wickets. He is their premier player and their reliable bowler and batter both. So important player for SVKM's strikers. Let's see whether their most valuable player picks up a wicket or two in his second spell. That's Tanpreet over there. He's a hit the deck kind of bowler. If the wicket is giving you some assistance, this guy can be dangerous. Hits the deck hard, puts in a lot of energy. Jatin Jatin Mehta, probably the last throw of the dice by the captain. So that's good to see. Even if things are not going their way, the match is completely out of their hands, but still they're trying to make a spirited fight back. That is so good to see. You always associate this kind of attitude with the Kiwis. The Kiwis will always fight till the last run, and that's what this team is all about. This team also knows to fight. He's putting a lot of energy late into the night. Not easy. And he's here with his two wonderful daughters. He got out early, and he's their hero, Jatin of SVKM, when it comes to this playing 11. And also, the dad is always going to be hero for the daughters. So Jatin is with his family over here. So, that is the reason they love him. He gives his 100%. That's the reason I told this over. Might see something special from this man. He hasn't conceded runs. He is trying to create chances. Just one run in this over so far. He might pick a wicket. Oh, what a shot that is. Using his feet, that's going to go all the way. The dew, no, it does not have any effect on that shot. That 4 runs will take the target closer. And 5 runs in this over with that boundary. 106 for 3. They need exactly 25 more runs to win this one. This might just open the floodgates now. And they would finish this off early. That is bowled with a lot of effort, but the direction was not right. That will get down the target to 24 more runs needed now. 24 more runs needed. And Jatin Mehta, he's into his last over. With that single, the score moves on to 108 now, 108 for 3. So last ball of Jatin's spell, he bowls it very well. He created the chance of the very first ball he bowled, and he ends up with the same effort. 6 overs, 23 needed. That is less than 4 runs per over. 3.75 to be precise.
Oh, that is pulled, swiveled across to hit it over the man over there. 35 balls in which to get those 23 runs. Oh, super effort that is. Love to see that effort. Any other team would just give up this match and try and finish this off on their own. But this team is trying to put his best foot forward, try fighting foot tooth and nail for this encounter. 34 balls, 23 runs to win. So 34 balls in which to get 23 runs. They're trying to create that pressure. All that pressure is being created. No, they needed to pierce that gap. Everyone was up in the circle, and it has gone all the way for an important bound. They need 19 of the next 32 now. Oh, this is a fabulous shot. What a shot that is. Off the back foot into the point region, piercing the gap. 116 for 3. They need 15 more runs to win. Fifteen to win now. The two boundaries have got the target closer. They need 15 runs in the next 30 balls. So they need three runs per over to win this one. They would like to finish this off and go back to their hotel rooms. This is a wonderful place to play cricket, and those after party matches, after match parties and after match dinners is what everybody loves to do it. So this is a place where you can enjoy your game. You can spend some time with your cricketing mates and have a nice time. Oh, nothing better than this venue over here. That was asking to be hit straight to the fielder though. This he could have hit it anywhere, but he hit it straight to the fielder over there. 15 of 29 now.
He wanted to hit it to the covers. The ball has gone straight to the fielder at short mid wicket. 15 needed in the next 28. Now that's straight to the fielder again. There is confusion. They finally managed to scrap that through, and 14 needed now. Truly, Marians have done a truly fantastic job of having control over this match for almost 35-36 over, which has been they have played so far. But kudos to this team as well. Svkm'S have put up a spirited fight in spite of the smallish total which they have got. In spite of the situation they are in, they are keeping the spirits high. So that is always good to see. Each team will have 3 matches to play in the league, so 4 teams in a group. Every possibility for them to make a comeback. Just 14 needed now. 26 balls in which to get 14 runs. Acha. That is off the back foot. That would beat the fielder. And will it go all the way? That's the only question. It goes all the way for that boundary. So 1 to 1 for 3, just 10 needed now. 121 for 3. They just need 10 more runs to win this one. 24. 25 balls. So 10 runs needed in 25 balls. Some of his mates want to finish it off early. And they need a lot of maidens to win this one. In fact, 2 or 3 maidens to make a comeback in this tournament, in this match, though. That is straight to Tanpreet, and they are celebrating their small successes, even though it has come a little too late. But that will help. So Aditya, after playing a fantastic knock with 5 boundaries and 20 balls, he gets 25 runs. He has done the job for his team. The left-hander has played some crucial boundaries. 4 boundaries in his innings of 25. So 4 overs and they just need 10. What a shot to start off the innings. Wonderfully played. Fantastic cover drive all along the carpet. That will take the target to a single digit now. That is just 6 needed. 6 needed to finish off the second match. Fazlanis, they got 200. The other team almost chased it down. They were 96 in 9 overs. The challenge over was the game changer, in which they played out a maiden actually.
They got a boundary of the first ball and they couldn't manage 4 runs in the next five. This match, complete control by truly Marians. Almost of whatever 36 overs have been bowled, 20 overs in the first innings and 16 overs in this innings. They have had complete control. Things have gone completely their way. Today is a full moon day and this team is in complete form. The truly Marians. Six needed. Will they finish off with a sixer? A couple of cover drives would do. A couple of boundaries from this man would do. Against Tanpreet. Again he pushes. Oh, that is so good. That is so good. Even in the last few runs to win, these guys are enjoying. That is the reason. That is how you play your cricket and enjoy every ball which you are there on the turf. So this is what is special about this team. Only team in international circuit, if you find the Kiwis do this. Even if there are 4-5 runs needed, 10-15 overs remaining, they still enjoy every bit of it. They still fight for it. So SVKM's displaying that kind of spirit, fighting for every run. That would be game, set and match. In fact, 5 wides will get the scores level. 1 to win now. The scores are level now. Harshit has got 24 runs of 29 balls with a couple of boundaries. And he finishes off with a cover drive. Will it go all the way? That's the question. In fact, it has gone all the way. He finishes off with a cover drive. So game, set and match for truly Marians. They win this one with 20 balls to spare and 6 wickets in hand. So Fazlani United won the previous encounter by a margin of 20-25 runs. These guys have made it 20. So Arshid with its all-round display with bat and ball is the man of the match for this second encounter.